हेलो एवरीवन, दिस इज संजय राठी। गेट 2026 की रिस्पॉन्स सीट आ चुकी है, क्वेश्चन पेपर आ चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। तो चलिए आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच। आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन फ्रॉम ईडीसी एंड एनालॉग गाइस। तो देखिएगा जरा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईडीसी। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ईडीसी। व्हाट इज गिवन हियर? Consider carrier transport in Zener diode in the breakdown region. What is the dominant transport mechanism for current flow in this case, guys? So Zener diode, this is the symbol for the Zener diode, right? It works in reverse bias, right? Normally we are connecting like this, plus minus. Once it will break down, the voltage across the Zener diode will remain constant, guys. Okay, now what is the Zener mechanism? Zener mechanism means when the doping is very high. When the doping is very high, what about the depletion layer? Very thin. This is the 1 part in 10 raised to power 3. That is the doping profile. This is the P positive and that is the N positive. Because of that, the depletion layer, the width of the depletion layer is very thin, in the range of what? Armstrong. And that's why there will be what? Tunneling phenomena. Tunneling means the charge particle will make a tunnel and pass through from P side to N side or N side to what? P side. And that's why the answer for this question, which is the dominant transport mechanism. The keyword is here is dominant. Keyword is here what? Dominant, guys. The dominant transport mechanism for current flow in this case is what? Tunneling. Is what? Tunneling. I think this is visible to you guys, everyone. This is visible to you. That question is visible. Okay. So that is the question. Right, and answer for this question is what? Tunneling. Drift when the diode is what? Reverse bias, no doubt. Reverse saturation current depends upon the drift mechanism. And diffusion means when the diode is forward bias, there will be the current mainly due to what? Diffusion, right? Or that is this is the answer for this question is what? Tunneling phenomena. Okay, now second one, this is the question from what? Analog. This is the question from analog. Now, so first of all, we will discuss question from EDC, then we will discuss questions from what? Analog, guys. So second one is, now this is the question. Consider a PN junction diode when it is forward biased by with the 2 volt. Which of the following is are correct? Actually, it is the MSQ, but only one answer is correct for this question. One answer is correct for this question, guys. Right now, I think now this question is visible to you. Consider a PN junction diode when it is forward biased with the 2 volt. Which of the following is our correct magnitude of the energy difference between quasi-Fermi levels EFN and N side and EFP on the P side? Right? To quasi-Fermi level, for example, always remember, first of all, this is the P side, this is the N side, this is EC, EV, right? On the P side, like this is the EC, this is EV. Where is the Fermi level on N side? This is the Fermi level for N side. And this is the Fermi level for P side. Right? Now, when we are making the PN junction, guys, remember, Fermi level will maintain a constant level. This is the EF. When there is no biasing. So on the P side, this is the EC, this is the EV, near to Fermi level. This is the P side. On the N side, this is the EC and this is the EV. When there is no biasing, guys, right, like this. And Fermi level will maintain the equilibrium level on the N side and on the P side. But when we are connecting when the diode is forward bias, what is the given in the question? Which of the following is our correct energy difference between the consider PN junction diode when it is forward bias the 2 volt between the quasi-Fermi levels EFN in the N side and EFP on the what? P side. Now the level will change and the difference between the EFN and EFP, this is given. EFN on the N side and EFP on the P side, energy difference. So energy we are calculating in what? In terms of what? Electron volt.
What is the energy? What is the applied voltage? That is the charge of the electron is Q, and what is the applied voltage? V. So that is, it is in the joule, it is the QV, but it is in electron volt, it will become divided by the Q, and that's why it is a what? Electron volt, guys. So this is the 2 volt is applied here, 2Q joule, or when it is divided by the Q, that will become what? 2 electron volt. This is the difference between the EFN and what? EFE. So in my class already I have discussed this question in a very detailed manner, guys. So for very detailed answer you can watch my session on what? EDC. Already I have discussed how the Fermi level will change in case of normal diode, in case of what? Tunnel diode, what is the tunneling phenomena, what is the Zener mechanism, what is the avalanche mechanism, chain reaction, each and everything I have discussed, guys. So this and this time the questions are very conceptual from what? Electronic devices and circuit, guys. So that is the answer, 2 EV, but no doubt it is MSQ, but only one answer is correct. Only one answer is correct, 2 electron volt. And remember, the energy in case of diode, in case of transistor, or in case of semiconductor, now it is in the range of what? Electron volt, guys. So this is the quasi-Fermi levels, that is the energy difference. Now third one is, this is the question from what? Early effect, guys. Figure shows the output characteristics of 2 different bipolar junction transistor, BJT1 with the magnitude of early voltage VA1 and BJT2 with the magnitude of early voltage what? VA2. This is the question based on what? Early effect. So what is the answer for this question? First of all, read question carefully. I think now it is visible to you. Okay, right. So what is the first option? VA1 is greater than VA2. Early voltage for BJT1 is greater than VA2. VA1 is the infinitely large. VA1 is less than VA2. VA1 and VA2 is a finite. So this is the MSQ question from EDC. MSQ, right? And now it is of 1 mark, guys. Only 1 mark. Okay, now what is the answer for this question? Because it is an early effect, that's why. Now always remember, this is the early, what is the early effect? That is called base width modulation. In BJT we have this type of characteristics, guys. This is for BJT1 and that is for BJT2, right? Now when there is no early effect, this is the characteristics, output characteristics of the common emitter. This is IC, this is called IC versus VC, and this is the different value of IB, 20 microampere, 30 microampere and so on. Now because of the early effect there is an elevation in the curve. Because of the early effect there is an elevation in the curve. Now you can extend it, right? So this is the extend here, right? Now watch this. More will be the elevation. This is the reason here. Let for example BJT1, this is the BJT1 and this is the BJT2, and this is the ideal condition when there is no early effect. When there is an ideal condition, it will meet at what? Infinity. So early voltage for this under ideal condition will become what? Infinite. But for these two reasons, BJT1 and BJT2, early voltage will be what? Finite value. Instead of what? Finite value. So which one is the finite value? If it is given VA is infinitely large, that is the wrong answer. This one is the wrong answer. VA1 is infinitely large. VA2 is the finite. Yes, both are finite, and that's why D answer is the correct. Both are finite. Now watch this diagram carefully. This is the VA1. This one is the VA1. More will be the validation, less will be the early voltage. And this is the VA2. More will be the elevation, less will be the early voltage, and that's why VA1 is less than VA2. Magnitude of VA1 is less than VA2. Why we are considering the magnitude only? Because if it is positive, then this side this voltage will be negative. For example, it is -25, -50 and so on.
But if it is negative, then it will be what? Positive. And that's why we are considering the magnitude only. So VA1, magnitude of VA1 is less than what? Magnitude of VA2. Remember guys, this is called channel, early effect is called base width modulation. Base width modulation. Right? With the help of early effect, we are calculating what? Output resistance. This time we have two questions on early effect. In analog again, we have the early voltage guys. This is the R0. Output resistance is given by VA upon, approximately it is given by upon ICQ. This is called DC current. From that we can calculate the R0, output resistance. So in my class already I have explained what is the base width modulation or early effect, channel length modulation in what MOSFET. So please solve this question carefully. Then next one is, this was the third question from the EDC. Then fourth one, 1 minute, give me guys. Yes, LED. Yes, this is the fourth one. Okay, 1 minute. Okay. Now what is the question given here? _54th number question means it is of 2 marks. It is of 2 marks guys. Okay, so what is given? Consider an LED based on a direct band gap semiconductor material with energy band gap 1.3 electron volt. So this is what gallium arsenide, for example. It is a direct band gap semiconductor. So this is the conduction band. This is the valence band. EK diagram. This is called EK diagram. This is the momentum. When the vacancy in the valence band and the electron in the conduction band have the same energy or same K, then this is called EK diagram. This is called direct band gap. So when the electrons switch from conduction band to what? Valence band, it will recombine with the electron and then it will give the energy in the form of what? Energy in the form of light. This is about the direct band gap semiconductor. So this is the meaning of this keyword, direct band gap semiconductor guys. Okay. Now Planck's constant is given, speed of the light. In which of the following wavelength ranges LED will not emit? What is the keyword here? Not emit. Not emit. So LED will, in which range the LED will emit guys? So LED will emit in which range? That is more important. Now when we are considering the LED will emit in which length, so first of all consider here, just I am giving you the value. This is the Planck's constant, hc by lambda. hc by lambda. Right? This is the energy gap. Suppose the electron switch from this point to this point, then how much energy it will give? This is given by this formula, hc by lambda. H is given is what? 6.63 into 10 raised to power minus 34 into light 3 into 10 raised to power 8 meter per second upon lambda you can calculate, and that is equal to nearly equal to what? Eg. Nearly equal to Eg. Then you can calculate what is the wavelength of this light. The wavelength of this light is approximately 6.63 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to power 8. But remember, what is the unit here? Joule per second. And you have to convert the joule into what? Electron volt. Because energy gap, what is the energy gap given is what? 1.3 electron volt. Or you can convert 1.3 electron volt in what? Joule. Both are correct. Now, when we are putting the value 1.3 electron volt and when it is divided by what? 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, that is converted into what? Electron volt. That will be converted into what? Electron volt. So ultimately we are getting the formula. Lambda, that is given by 1.24 upon Eg. You can arrange. Here the lambda, it is in the range of micrometer, or Eg it should be in what? Electron volt. Yes, you can arrange. Eg should be in electron volt and you can arrange. Then you will get the formula from that. Okay.
Now, or when it is converted into what? Nanometer, because lambda it is given in what? Nanometer. So nanometer means it is multiplied with the 1000. So it will become 1240 upon Eg. That should be in electron volt into what? Nanometer. This is in what? Nanometer. Now guys, now you can calculate the value. Bring your calculator and give me the answer. What is the value, guys? What is the answer for this question? Yes, tell me. So now when we are calculating, 1 minute, I have calculator. I think you also have the calculator. Okay, when we are going to calculate Eg, 1.3 electron volt is given, 1240 upon Eg 1.3, so we'll get 953.8. Okay, 953.84. So this is the wavelength in nanometer. At this wavelength, that will emit the light. Okay, but practically it has some range, guys. It has some range. Okay, it is highly frequency sensitive. When it will give the frequency or wavelength, just exactly that depends upon what Eg. Okay, it is highly frequency sensitive, or we can say when there is a change in the lambda, there will be the change in the responsivity. Responsivity will change. The responsivity will change means what? We are getting this type of curve, guys. At this point we are getting very high. For example, this is the 953. So this is the peak value of this. When we are moving right side or left side of this lambda, the response will reduce. The response will reduce, guys. So in my class already I have given you the formula for that. So please go through that and you will get the idea what is the del lambda. So we are getting the plus minus del lambda by 2, we can say. That will be the range, guys. That will be the range. And here we are having the peak value. Here we are having the peak value of the response. Means we are getting the peak value of the light at this point, intensity at this point, guys. So this is the value 953.8. So what is the answer given? 950 it is given. Okay, nearly equal to 950. Okay, no problem. At this point it will emit. It will emit the light. But what is the question? Range LED will not emit. It is far away from the 950, not emit. 1090 far away from the 950, not emit. 510 far away from the 950, not emit, because it will give this type of response, guys. Right? This type of response. So in my session already I have derived this equation. What is the del lambda for that? Right? You can give the value of that. It is around, you can calculate, or you will calculate around 50 something, right? Nearly equal to what? Total del F you will get. This one in terms of what? This. So this is the answer. Already I have derived in my class. Okay, go through it, calculate that value. Okay, I think it is come around 40 or 39 something. Okay, and that is the formula already I have derived in my class. That is H is lambda square by SC into what? 2 kT. That is the kT is what? Boltzmann constant. K is the Boltzmann constant. Lambda is what? Wavelength. H is the already given Planck's constant, and C is given what? 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Okay, that is already given in the question. So no need to use this formula in exam. No need to use. Approximately answer. This is the 950 plus minus 20. At this point it will emit the light. This is the far from this. This is the far from this. This is the far from this, and that's why that is the. These are the answer A, B and D. Okay. A, B and D. तो देखो मैं ना इतना डिटेल में इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास को एकदम अच्छे से वॉच करो. स्पेशल डायोड के मेरे सेशंस देखो. पेड क्लासेस में आप जाओगे ना तो पेड क्लासेस में डेरिवेशन होता है कंप्लीट. कहाँ से आया, कैसे आया फॉर्मूला, और हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ के कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं. और जब आपका आता है क्वेश्चन तब फिर बोलते हो कि यार ये सर कहाँ से आ गया. होता है, कम आते हैं. इसके ये मतलब नहीं है कि हर चीज को आप बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहे हो.
इसको आप ट्रिक से भी क्वेश्चन को बना सकते थे, क्या कर सकते थे, इसको भी आप ट्रिक से भी क्वेश्चन को बना सकते थे गाइस। तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। जब आप फॉर्मूला देखो, रिकॉल करना कई बार डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने क्या नाम है, आपने अगर डेरिवेशन किया है तो डेरिवेशन से आप चीजों को याद कर सकते हो, राइट। और डेरिवेशन से चीजें याद भी होती है और आप उसको यूज भी कर सकते हो, और आप उसको यूज भी कर सकते हो। ओके नाउ अब आते जरा एक और देखो, ये अब आप मैं एक और क्वेश्चन है ईडीसी का, उसको पहले डिस्कस कर लिया जाए। 1 minute, वेयर इज द क्वेश्चन? This is one question on what diffusion current, guys. 1 minute. Good question. There was one question on a diffusion current. I am going to discuss here. Give me 1 minute. तो यहाँ तक के क्वेश्चन का लेवल प्लीज राइट इन कमेंट्स बॉक्स गाइस। क्या आप बताइए डिटेल में पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो कभी कभार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इतना ज्यादा चीजों को याद रखना भी कई बार डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिसको अगर टॉप रैंक अचीव करनी है गाइस उसको तो करना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हो। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम एनालॉग गाइस। ईडीसी का एक और शानदार क्वेश्चन है। think that was the NAT type. Yes, that was the NAT numerical answer type question. Yes, this is the question. Here it is the question. I think now it is visible to you. Yes, please. Consider that the concentration of electron in a semiconductor bar varies linearly. और बढ़ा देते हैं थोड़ा. Now it is visible to you. अब रीड करिएगा क्वेश्चन को. Consider that the concentration of electron in semiconductor bar varies linearly from 2 into 10 raised to power 17 to what? 1 into 10 raised to power 16, from 1 micrometer to 4 micrometer. X is given in x direction. Assume that the concentration of electron is not varying along the other direction, y and z direction. Okay, so that variation it is in x direction means current will be in x direction. Yes. Now given the mobility of electron is 1400, thermal voltage is 25, electronic charge is this much. The density of electron diffusion current is, it nothing is mentioned, but what is not written here, magnitude of the current is not required because the dimension it is given, and that's why we have to calculate the current in what? X direction. Current in x direction. Then how we can calculate? Remember, there is a concentration gradient. Right? Concentration decreases like this. This is the X, 4 micrometer. It is given. It is 1 micrometer. So what is the gap here? 3 micrometer. Now what is the value at this point? 10 to the power what? 2 into 10 to the power 17. And here it is a 1.1 into 10 raised to power 17. You can write 1 into 10 raised to power 16 as what? 0.1 into 10 raised to power 17. 3 micrometer. Now you can calculate the concentration gradient N2 minus N1 upon X2 minus X1. So what is the N2? 0.1 into 10 raised to power 17 minus 2 into 10 raised to power 17 upon
4 minus 1, convert it into centimeter, 10 raised to power minus 4. Now guys, you will get the answer minus 1.9 into 10 raised to power 21 per centimeter cube, 4. This is called the concentration gradient in what? Negative. Right, first of all get the concentration gradient. The concentration of electron is higher at this point, and concentration of this is in per centimeter cube. This is the concentration of electron. This is x in micrometer. This is the x direction. There is a decrease in the concentration from 2 into 10 raised to power 7 to this. We can calculate the slope, or this is called concentration gradient, dN by dx. It is negative because it is decreasing. Now here it has higher concentration, here it has lower concentration, and linearly graded. This is what? Linearly graded, we can say. But we have no idea. We can't, if suppose it is MSQ, but in a particular question, is it mentioned here linearly graded? Watch this. Consider the concentration of electron in semiconductor bar varies linearly. Yes, linearly. So it is called linearly graded. So now linearly graded, you can find, so electron will move from higher concentration to lower concentration. Electron will move in this direction, then current will be in this direction. And what is the current density? IN upon A. Right, IN upon A. And it will be in negative x direction. And that's why answer should be what? Negative. But in an answer sheet it is given as positive. So you can claim it, guys. If you have given the answer in negative, then it may possible that both negative answer, both positive answer may be correct. Or if it is marks to all, then it will become very difficult, guys. Okay, तो जिन्होंने बनाया है ना उसको अखरेगा, मैंने उस दिन भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था. So what is the answer for this question? Diffusion current density is Q dN dN by dx. dN is called diffusion constant. According to Einstein equation, it will become mu n into what? Vt. Mu n it is given in the question 1400, Vt it is given in the question Vt 25 1400, right? 1400 into 25 millivolt, 0.025 volt. You can convert, right? And you can find, first of all, find the dN, that is called diffusion coefficient, 1400 into 0.025, 35 centimeter square per second, guys. This is the dN. Now Q, concentration gradient. So what is Jn is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 dN 35 into dN by dx minus 1.9 into 10 raised to power 21. Okay, that is the concentration gradient upon 3, guys. Where is the 3? 4 minus 1. 3 also. Sorry for that mistake. 4 minus 1, that is the 3. Already I have taken the power here. 1.9 into 10 raised to power minus 21 upon 3. So you can put upon 3. Right? Now you can calculate the value. So you will get the answer. 1.6 into 35 into 1.9 divided by 3, to 35.46 into 100 ampere per centimeter square. Ampere per centimeter square, guys. But answer it is given ampere per mm square. Always check the unit, guys. New students, always check the unit. Ampere per millimeter square. First time it is given in the ampere per millimeter square. So what is the ampere per millimeter square? Remember, in 1 centimeter we have 10 mm. So in a 1 centimeter square we have 100 mm square. So guys, you can convert centimeter square divided by 100. So then it will become 35.46 into 100 upon 100 mm square. So this is nearly equal to 35.46 with a negative sign, because that is negative. So answer should be what? Negative. Answer should be what? Negative. But it is given in the positive. The range it is given is what? Positive. And that is the problem, guys. No doubt. 34 to what? 36. That range is given. But actually the answer is what? Negative. So you can claim it. अगर आपने ये आंसर मार्क किया -35.46 तो आप मार्क करो, क्योंकि यहाँ पर देखो पूरा दिखा हुआ है x डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी दिया हुआ है, z डायरेक्शन में नहीं है. मतलब नॉर्मली वी आर यूजिंग द फॉर्मूला
in what positive x डायरेक्शन। ओके, तो ये है मैग्नीट्यूड, वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज ये भी वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन कहाँ पूछा है, यहाँ तो ये भी नहीं लिखा है कि x डायरेक्शन में करंट निकालना है या y डायरेक्शन में करंट निकालना है, राइट। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि फाइंड द करंट इन x डायरेक्शन, राइट। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जब दिया रहता है तो क्वेश्चन उसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो आप क्लेम कीजिए, आपको मार्क्स नंबर मिलने चाहिए इस क्वेश्चन में, या तो फिर मार्क्स टू ऑल हो जाएगा। ओके देन, so that is the range. So this is the question from what EDC. Now question from what analog, guys? Question from analog. तो चलिए आइए देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो गया EDC का, now from analog. तो आपने EDC में देखा एक क्वेश्चन LED पे नया आ गया, जिसको मतलब आप देखोगे, अगर मैं कंक्लूड करूं तो वन क्वेश्चन आ गया LED से, राइट। फॉर्मूला अच्छे से लगाना था आपको, थोड़ा सा डेप्थ में आया। एक क्वेश्चन आ गया जेनर डायोड, वो भी डेप्थ पे आ गया। ये भी हमारी क्लास में आप देखोगे पूरा डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। जेनर डायोड के बाद एक और क्वेश्चन आया अर्ली इफेक्ट। ये तो मैं हर बार हर साल इसको डिस्कस करता हूं। अगर मेरे मेड इजी के नोट्स देखोगे, जब मैं मेड इजी में पढ़ा रहा था उस समय भी मैंने इस अर्ली इफेक्ट को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है मेड इजी से ही, राइट। तो देखो ये एलईडी। फिर एक आ गया डेप्थ वाला क्वेश्चन डिफ्यूजन करंट पे। वैसे डिफ्यूजन करंट पे पहले भी कई बार क्वेश्चन आपका आ चुका है गाइस। तो देखोगे आप ना हर क्वेश्चन। और एक आ गया व्हाट फर्मी लेवल पे, जो वो भी फर्मी लेवल पे सीधा क्वेश्चन नहीं आया आपका। फर्मी लेवल आपने 2 वोल्ट लगाया तो कितना क्वासी फर्मी लेवल पे क्या गैप होगा। तो ऑल द क्वेश्चंस आर व्हाट हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गाइस। थोड़ा डेप्थ स्टडी करनी होगी। नाउ एनालॉग, अब आते हैं एनालॉग में। तो ये है एनालॉग फॉर ईसी GATE 2026 guys. Now this is the first question from the analog. Yes, operational amplifier it is given, right? Operational amplifier given. The ideal op-amp circuit shown in the figure produces output voltage V0. The ideal op-amp circuit shown in the figure produces output voltage V0 X when the switch S is open. When the switch S is open, which of the options represent the output of voltage when S is closed, guys? When S is closed. So I think now it is a question visible or yes? ये read कीजिए question. Now it is visible. Operational amplifier given 2 kilo ohm, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm resistor. It is initially the switch is open. Now the switch is closed. So what will be the output? Guys, remember. Answer X, 2 by 3x, 3 by 4x, 1 by 2x. All the answers are what? X or what? Less than X. Definitely it will be less than X. Why? When the switch is closed, RF will reduce. When the RF will reduce, what is the gain of the non-inverting operational amplifier? The non-inverting operational amplifier, the gain for ideal operational amplifier is 1 plus RF by R1. 1 plus RF by R1. So in first case, when the switch is open, the RF is 2 plus 1, 3. In first case, RF is equal to 2 plus 1 is equal to what? 3. And that's why the gain is 1 plus 3 by 1. That is equal to what? 4. In first case, the gain is what? 4. In first case, the gain is 4 when the switch is open. 1 kilo ohm, it is in action. Switch is open. In second case, the gain V0 upon Vi is equal to 1 plus. When the switch is closed, guys, when the switch is closed, this will short circuit the resistor, then RF will become only 2 kilo ohm. So RF will become 2 kilo ohm, and that's why this will not 2 by 1, the gain is what? 3. So in a second case, the gain is 3. In first case, gain is what? 4. So what is the ratio of the gain? The ratio of the gain A2 by A1 is equal to what? 3 by 4. In second case, the gain is 3. In first case, the gain is 4. Input is same. Input is what? 1 volt. That is same. What is the output in the second case and what is the output in the first case? That is nothing but A2 into Vi, A1 into Vi. Because both the cases, the input is same. Vi cancel. That is the 3 by 4. And what is the output in first case? X. So what is the output in the second case? 3 by 4x.
3/4x, guys. So that's why the answer C is the correct one. That's why the answer C is the correct one. 3/4x. 3/4x in this case. This is the question from operational amplifier. बहुत ही सिंपल सा, देखो ऐसे इतने क्वेश्चंस जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है, ये सब कुछ हमारी क्लास में डिस्कस किया हुआ है. ओके, नाउ अब आ जाते, देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर फिर से आ गया. क्वेश्चन नंबर 18. इसको मैंने कई बार बताया, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए यूज होता है गाइस. यस, हाँ बस दिख रहा है. हाँ अब दिख रहा है. कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर. Vi is 3 volt. There is a negative feedback, guys. So one by one we will explain. Vi is given as 3 volt. This operational amplifier is converted. There is a negative feedback. 1 kilo ohm, 2 kilo ohm, VCC. Vb is 0.7 volt is given. Beta is 99 is given for BJT. VCC is the 12 volt it is given. Which of the following option is correct value of the current I0? I0 we have to calculate. Where is the I0? Base current. This is the base current I0. Right. Consider this one. Assume VB. Which of the following? Nothing mentioned about the op-amp. Means op-amp is what? Ideal. If the op-amp is ideal, what is the gain of the operational amplifier? Infinite. What is the current enter into the operational amplifier? 0. So this is the IC. This is the IB. And what is this current? IE. I is nothing but 1 plus beta times of what? IB. Once you have the value of IE, you can find the value of I0. That is nothing but IB. Now, what is the role of this 0.7? Nothing. Because there is a negative feedback, you can apply the virtual short concept. So according to the virtual short concept, Vp is equal to Vn is equal to Vi, that is equal to what? 3 volt. At this point, it is the 3 volt, guys. So I will redraw the diagram so that BJT is given. Okay, one operational amplifier is connected here. There is a negative feedback. One Vi is connected here, 3 volt. RC it is given, VCC it is given, but these two are not required. Okay, now this RE is required here. What is the value of the RE? 1 kilo ohm, it is given. I0 is required here. This is called the base current. This is the IC. This will become IE. I is nothing but 1 plus beta times of IB in active region. Okay, this value is what? VB. This value is what? VBE. This is the 2 kilo ohm resistor. Now, watch this. First of all, according to the virtual short concept, Vp is equal to Vn is equal to Vi is equal to what? 3 volt. The voltage at this point is 3 volt because it is the ideal operational amplifier. This is the 3 volt. This is the 3 volt. Then you can calculate the IE, guys. IE will become VE upon RE. What is the VE? 3 volt upon RE, 1 kilo ohm, 3 milliampere. 3 milliampere. What is the value of the IB? IB is nothing but IE upon 1 plus beta. IE is 3 upon 1 plus 99. So it will become 0.03 milliampere. This is the answer. 0.03 milliampere because this is the I0. So what is the I0? It is given in microampere. Then it's why it is multiplied with the 1000. This is converted into microampere. So you will get the 30 microampere. That is the answer given in the question, 30 microampere. D. Answer for this question is what? D. Okay. Now we have the value of the IE. What is the value of the IE? 3 milliampere. What is the value of the IC? What is the value of the IC here? IE minus IB. Because I is equal to IC plus IB. So IE is what? 3 minus 0.03. It will become 2.97 milliampere. If the IC is required, that 2.97 milliampere. Can you calculate what is the value of the VCE? Now what is the RC is given? 2 kilo ohm. Because the transistor for saturation it should be more than what? Ideal value 0 volt. So you can calculate, you have to calculate the VC. VCC minus IC into RC.
this VCC minus drop across this RC plus drop across this RE will give you the value of VC, IE into RE. Now my dear friend, this is the value. What is the value of the RC? It is given VCC, it is given 12 volt minus 2.97 into what? 2 minus what is the value? 3.03 milliampere into what? 1. Now I think this is the what? 3 into 2 6 minus 3 9, 12 minus 9 nearly equal to what? More than what? 0.2 volt. What is this 0.2 volt? It is the value of the VCE set. It should be greater than what value of the VCE set. Otherwise transistor will be in saturation. Then we have to change the formula. We have to change the formula, guys. Right? So operational amplifier, actually it will provide you the negative feedback. Right? Negative feedback. Now our current enter into the operational amplifier is 0. Now just to watch this, next time they may ask what working of this circuit. Working of this circuit. So always remember, in my class I am going to discuss what is the negative feedback. When the temperature increases, guys, when the temperature increases, remember how there is a negative feedback. Simple question. Right, this is the VI. Right, output of the operational amplifier. This is the gain of the operational amplifier. So V naught is equal to AV into VI. What is this? AV into VP minus VN, positive terminal minus negative terminal. Negative terminal depends upon the VE. Okay. Now, suppose the temperature increases, because IC is equal to beta IB plus 1 plus beta times of ICO. Right? So when the temperature increases means what? Temperature increases, ICO increases. IC increases, and that's why IE increases. That is the circuit is unstable. Temperature increases, ICO increases, IC increases, IE increases. But when the IE increases, the drop across this resistor will increase. Means this voltage VE will increase. When the VE will increase means VN will increase, because VN is connected here. VN will increase. When the VN will increase, guys, when the VN will increase, VP minus VN, what is the VI? Operational amplifier VI, what is the VI? VP minus VN. VP is a constant 3, but this will increase, and that's why the overall VI will decrease. VI will decrease. What is the output of the operational amplifier? V naught. This will decrease. When the V naught will decrease, now it is less forward bias because of this IB will reduce. When the IB will reduce, what about the IC? IC will reduce, and that is called what? Compensation technique. Right? Rise in IC is compensated. So this is called what? Negative feedback. So this type of questions I am discussing in what class? In interview, it will help you guys. तो इंटरव्यू में अगर आपको परफॉर्म करना है तो ऐसे पता होना चाहिए. ये तो क्वेश्चन बन जाएगा वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट लगाकर. तो ये हो गया इसके बारे में. आज बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये ऑप-एम्प पे. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द analog, guys. There is a one question again from the operational amplifier. Now BJT. Okay, तो BJT, चलिए बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. अब देखो जरा क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 50 है, मतलब ये 2 नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और MCQ है. MCQ. A small signal source VIT, A cos of 10 to the power 5t plus B sin of 10 to the power 7t. Right? One frequency is 10 to the power 5 omega t. One is what? 10 to the power 7 is applied to the BJT circuit as shown in the figure. Assume the zero source resistance. RS is 0 because input source resistance is 0. VB is 0.7. Beta DC is 99. Early voltage is 100. And thermal voltage is 25 millivolt. Effect of the internal parasitic capacitance of the BJT may be neglected. Parasitic capacitance means what?
wiring capacitance, stray capacitance, junction capacitance, diffusion and transition capacitance, all are neglected here. So means what is the lower cutoff frequency, right? When we are talking about the internal capacitance, means what is the higher cutoff frequency? 0. Sorry, higher cutoff frequency. This is the band pass filter like this. This is the higher cutoff frequency. This is the lower cutoff frequency. All the parasitic capacitance, diffusion, transition, wiring, stray capacitance, all are negligible. Like, effect of internal parasitic capacitance may be neglected. When it is neglected, the higher cutoff frequency will become infinite. Right? This is the curve. And what about this frequency? 10 to the power is very, very high. 10 to the power 7 is also very, very high. And that's why, no doubt, there will be the FL. FL is due to what? Coupling capacitor. CC1, CC2, bypass capacitor. This is the bypass capacitor. It has a very, it is not has the infinite value, guys. It has the fixed value. It has the fixed value, 100 nanofarad, 100 nanofarad, 10 microfarad. But guys, what are the cutoff frequency? That is, the cutoff frequency is very, very high, guys. 10 to the power 5. So cutoff frequency we can calculate by using this formula, this formula, this formula. The cutoff frequency is what? 1 by 2 pi RC or 1 by RC. Right? Here the cutoff frequency will become RC into what? That one. Then here it will become so on. But my dear friend, watch this. 10 to the power 5 is very, very high as compared to the cutoff frequency. This is very, very high as compared to the cutoff frequency. But most important thing, watch the answer carefully. चारों आंसर में वो पार्ट है. A cos of 10 to the power 5t, B sin of 10 to the power 7. A cos of 10 to the power 5, B sin of. A cos of 10 to the power B sin. A cos of 10 to the power B sin. तो सब में तो है. इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी इसमें कैलकुलेट करना ही नहीं था. अदरवाइज अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में रहता है, एक आध कंपोनेंट आपको गायब कर देता, तो आपको फिर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ती. हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो इनफाइनाइट है. हाई फ्रीक्वेंसी हर हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देगा, लेकिन ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर सकता था. इट कैन ब्लॉक द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ दिस द कपलिंग कैपेसिटर एंड बाईपास. इफ यू वांट द डिटेल एक्सप्लेनेशन, गाइस, ज्वाइन माय सेशन where I am explaining all what is the role of FL, what is the role of FH. Now in this question, minus plus minus, first of all it is a common emitter configuration, and that's why the answer will be negative, 180 degree phase shift, and that's why plus answer is not possible. So answer from A or what? C. आप अपना sequence change करें, answer should be what? Negative. Answer should be negative. Second thing, if this diagram is given, guys, one register is connected, another register is connected here, that is bypassed. One coupling capacitor is connected here, we are taking the output. This is the RC, this is the VCC. Okay, potential divider it is given. Here it is the capacitor is connected, here the VI is connected. What about the RS of the VI is 0. This is called R1 and R2, 100 kilo ohm, 25 kilo ohm. This is given as 500 ohm, and that's why it is 0.5 kilo ohm. Convert it into kilo ohm. This is given as 1 kilo ohm. Okay, RC, that is given as 5 kilo ohm. VCC, it is given as 12 volt. Now my dear friend, from approximate analysis, always solve with the approximate analysis in exam hall. What is the answer for this question? Approximately, in my class already I have explained, the mid-band voltage gain is given by V0 by Vs minus RC upon what? This resistor. If it is unbypassed, then it is called RE. Because it is already bypassed, this capacitor will act as short circuit. So this is the RE. So what is the RC? Minus 5 upon RE, 0.5. The gain will become minus 10. Gain will become minus 10. But practically when we are going to calculate the gain, this is what? V0 by Vs. This is nearly equal to minus RC upon what? Small re plus capital re. Small re plus what? Capital Re. That will be the gain for this particular question, guys. Now how we can calculate the small re? Just to calculate the small re, Vt by I.
Vt by what? I. If suppose it is a numerical answer type question, then you have to calculate what is small re. So then Vt by what? IE. Vt by what? IE. So Vt is given in the question, volt equivalent of temperature 25 millivolt. Beta is given, Vb is given, early voltage is also given. But if suppose you are going to calculate in exam hall, it will take around what, 5 to 10 minutes. No doubt we can solve it. I'm just giving you the hint. We can use the model. RE model we can use. Or early voltage it is given. Early voltage it is given 100 volt. Right? It means you have to calculate the output resistance also. So early voltage में इस बार दो क्वेश्चन है, one in EDC, one in analog. VA upon ICQ. That will give you the output resistance of the circuit R0. VA upon what? ICQ, guys. V upon ICQ, you can calculate the output resistance. Now you can also calculate the GM, that is called the transconductance. IC upon what? VT. IC upon VT. You can calculate the R pi beta by GM. Beta is given in the question, GM. But approximately this is the overestimated result. The gain is what? -10. The gain will be less than -10 because now once we are connecting the RE, it will be less than what? -10. It may be -9 something. So watch the answer carefully. Which one is the less than -10? This one. Because this is the input signal multiplied with the gain. So -9.1, and that's why the answer A is the correct one. Answer A is the correct one. This is the A is the correct one from approximated analysis. तो सीधा आप A को करके आ जाते हैं, कुछ भी देखना, सीधा आंसर निकाला और बना के आ गए. अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर बनाना है तो सबसे पहले इसमें आपको लगाना पड़ेगा व्हाट? पोटेंशियल डिवाइडर. ठीक है, मैं जस्ट हिंट कर देता हूं, आप बनाइएगा और एग्जैक्टली आपका क्या आंसर आ रहा है वो मुझे बताइएगा. मैं आपको बताता हूं, जरा इसमें सभी कैपेसिटर को ओपन कीजिए. राइट डाउन द पोटेंशियल डिवाइडर हियर. इफ यू वांट टू कैलकुलेट, तो पहले कैपेसिटर को ओपन करो. ये 0.5 बन गया, ये 1 किलो ओम बन गया. यहां पे निकालो RTH, फिर निकालो VTH. VTH मतलब यहां आ जाएगा 25 upon 100 plus 25 into 12. This is the value of the VTH. You can calculate, I think 2.4 volt. RTH हो गया 100 parallel with the 25. ये आएगा 20 किलो ओम. You have to consider this 20 kilo ohm. You have to consider this 2.4. VB 0.7 volt. This is the IB. And always remember the current here is 1 plus beta times of IB. That is nothing but RE or RC. This is the 12. This is the 5 kilo ohm. From this, you can calculate the value of what? IB, guys. You can calculate the value of IB. So write down the KVL here. Write down the KVL here. Once you have the Thevenin's equivalent, now the role of this diagram is over, guys. From the DC analysis, you can calculate the IB. IB will become 2.4 minus 0.7 upon this resistor 20 kilo ohm. You can write the KVL and it will become 1 plus beta. Beta is given as 99. So 1 plus beta times of IB. IB already we have taken the common. Into what? 1.5 kilo ohm. Right? I can write the KVL. Right? 2.4 is equal to 20 times of IB plus 0.7 plus 1 plus beta times of IB into what? 1.5. This one. See, this is the 1.5. Beta is given as 99. You can calculate the IB. 1.7 upon 20 plus 100 into 1.5. 100 means what? 150, 170. 1.7 divided by 170, it will become, you can calculate the IB, right? 1.7 divided by 170. Wow, ये तो easy calculation हो गया. 1.7 divided by 170. 0.01 milliampere. Okay, IB. So what is the I? 1 plus beta times of IB. 100 times of IB. 1 milliampere.
1 milliampere. Right, check my calculation. 1 milliampere. This is the milliampere, this is the milliampere. What is the RE? VT by IE. So VT is 25 divided by IE, 125 ohm. This is in ohm rise, I. So now you can calculate RE. You can approximately, once you have the RE, again use this approximate formula. So this is what minus RC, 5 divided by RE, 0.025 plus 0.5 plus 0.5. So you will get 5 divided by 0.525. देखो आ गया 0.952, यही कम हो गया, आ गया in the range of what? -9. Yes. Now guys, RE, again if you want the very exact one, then you have to use what? GM model. You have to use what? Pi model. What is the pi model here? GM V pi. This is the R0. Just I am giving you the hint. Now calculate the answer. This is the collector terminal. This is the emitter terminal. This is the base terminal. Now in a transistor, in AC analysis, we have the 0.5 kilo ohm. What about the next resistor that is bypassed here? Right? Okay. 1 minute. Just I am connecting the model and I am giving you the answer. Once you have the value of RE, then you can use this model. तो भाई नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर हो जाओ, और जितने भी है आज का तो सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन दिस इज द GM V pi, दिस इज R0, right? This is the base, this is the emitter. Now guys, remember, from collector to ground RC is connected because AC analysis it will become 0. From base to ground 100 kilo ohm, 25 kilo ohm. Emitter to ground 0.5 is connected. This is bypassed. This is the ground. 0.5 kilo ohm is connected. Collector to ground RC is connected. 5 kilo ohm. 5 kilo ohm is connected. From base to ground, two resistors are connected parallel. This is given as what? Vs. Right? Now remember, there is a one resistor from base to ground in this model. This is called R pi. This is connected here. The voltage drop across this R pi is what? V pi. From base to ground it is connected, but here from base to what? Emitter, R pi is connected. This is called what? Pi model. Now guys, GM you can calculate IC upon VT. IC is nothing but beta IB upon what? VT. Beta is 99, IB is 0.01 upon VT 25. You can calculate the IC upon VT. I am going to calculate 0.01 into 99 divided by 25. This is around 0.0396 milliampere per volt. This is the value of the GM. Okay, milliampere per volt. This is the value of the GM. From GM you can calculate the R pi, beta upon GM. So beta is the 99 upon GM. Alright, into beta 100. Right. Please check my calculation. This is the milli. It will convert into the kilo ohm. To check my calculation, this is in a IB. Yes, it is in a milliampere. VT is in volt. No. It should be converted into what? Millivolt. Volt. 0.025. Because it is in volt. Otherwise, you will get the wrong answer, guys. 99 into 0.01 divided by 0.025. 39.6 milliampere per volt. Please check my calculation, and then reciprocal of this into what? 100, 2.52 kilo ohm, 53 kilo ohm we can say. This is the value of the R pi. So you can put here R pi 2.53 kilo ohm, and you can put here GM. This is the GM. Now guys, this is the V0.
So this question will become what, very lengthy, or otherwise what you can put here, output current is what, I naught. You can write down the KCL and then finally you can write down the KVL. This is the IB. From this point to this point, right? Write down the KCL, get the value of the VS, then write down the KVL, get the value of the V0, and then you can get the exact answer. तो क्या एग्जाम हॉल में इतना टाइम मिलता? तो मैं आपको पूरा एक क्वेश्चन है ना, इसको अलग से पूरा सॉल्व करके exactly 9.1 इसमें आपका आंसर आ जाएगा. What will be the R0 here? Remember, R0 is nothing but VA upon what? ICQ. Early voltage is also given. We have the value of the ICQ. IC is beta IB 0.99. VA is 100. So you can also find the R0. Now consider all these, you will get the exact answer. But in this question, not needed, guys. Directly you can solve. This is the question from the model. Please try to solve and give me the answer in comments box. What we are getting exactly. Get the RPI. Now apply the network. Remember, this is the VS. So from this point to this point, it is VS. Or in here, it is the IE current. You can also write what, 1 plus beta times of IB. Small IB, na? 1 plus beta times of IB. This is the IE current, guys. So you can write the KVL, right? And then directly you can find the value, guys. Okay. So ये है कहानी. Now next question is from the analog again, that is what, operational amplifier. So answer already I have given for this question, already I have given directly without pen. You can directly give the answer minus 9.1, this one. But this question is very very conceptual. Next class में हम लोग इसको पूरा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Yes, देखो, this is again the question on the operational amplifier. A circuit using an ideal op amp is shown in the figure. Which of the following option gives the correct value of the current Ix? Correct value of the current Ix in this loop. 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, 2 volt, 2 kilo ohm resistor, it is connected. Answer is given as, it is a MCQ. 53 question, yes, it is a MCQ. 2 milliampere, 1.5 milliampere, 3 milliampere, 0 milliampere. Right? How to solve this question? Remember, guys, this is the operational amplifier. This is minus, this is plus. This is V0. What is given here? 2 kilo ohm. One RL is connected here. This is the V0. One resistor is also connected here. Ix you have to calculate. This RL is given as 2 kilo ohm. This resistor is also given as 2 kilo ohm. Current through this is required. What is the gain of the system? 1 kilo ohm, 1 kilo ohm. And input voltage is given as 2 volt. And this is connected to ground, guys. This was the question. And find Ix. Nothing is mentioned means ideal operational amplifier. Otherwise, it is mentioned in the question. Circuit using an ideal op amp. Which of the following options is our correct value? Which of the following is the correct answer? Now, remember, guys, according to virtual short concept, this voltage is 0, this voltage is 0 because there is a negative feedback. Directly you can give the output because V0 is equal to minus RF by R1 into Vi. Minus RF 1 by 1 into Vi. So that is the Vi is 2 volt. So minus 2 volt is the output voltage. So you can directly say this is the minus 2 volt is the output voltage. Or otherwise you can apply the KCL. 0 minus 2 upon 1 plus 0 minus V0 upon 1. 0 minus V0 upon 1. What is the current enter into the op amp? 0. You can say V0 is equal to what? Minus 2 volt. So from both the method you can find the V0. Now write down the KCL at this point. What is the outgoing current? IN. What is the outgoing current at I1? What is the outgoing current? Ix. Okay. So you can say sum of the outgoing current
is equal to 0. So you have to calculate the Ix. What is the I1? V0 minus 0 by 1. V0 by 1. V0 minus 0 by RL. V0 by, what is the value? 2 is equal to 0. Now my dear friend, what is the value of the V0? Minus 2. Minus 2 by 1 minus 2 by 2 is equal to 0. So 2 plus 1, 3. So Ix will become 3 milliampere, positive value. Current will enter into the operational amplifier, guys. Actually, current will enter into the operational amplifier, 3 milliampere. That is the answer. All answers are positive, and that's why there is no confusion. But one answer is negative, then one answer is positive, then it will become conceptual question, guys. So in my class already I have explained that operational amplifier will give you the current because there is a 180-degree phase shift. It is a voltage controlled amplifier. This is the actually internal diagram of the operational amplifier, right? Remember, because there is a 180-degree phase shift, it is positive, there will be the negative output, AV into VI, and the current will move in this direction. Operational amplifier will give the current, but what is the direction of the current? From ground towards this resistor and enter into the operational amplifier, and that's why we are getting the Ix positive value. तो इतना क्वेश्चन की डेप्थ में जाओगे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तब आप बोलोगे। सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने, लेकिन आगे और डेप्थ में जाना है तो आप ये देख सकते हो। ये था इसका आंसर। एक और आया क्वेश्चन, एनालॉग पे भी 3 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द मॉसफेट, गाइस, फ्रॉम द मॉसफेट। अच्छा क्वेश्चन था ये भी मॉसफेट पर। यस, थोड़ा सा क्वेश्चन रीड कर ले अच्छे से। देखो, N channel MOSFET is connected as shown in the figure. VTH is given 1 volt, VDD is given as 5 volt, mu n 𝐂𝐻 W by L, जिसको बोलते हैं Kn dash W by L, mu n 𝐂𝐻 W by L, 2 milliampere per volt square, and neglect the channel length modulation effect, means lambda is equal to 0. The gate voltage of the N channel MOSFET rounded off to 2 decimal places. हमको निकालना था गेट वोल्टेज VG, यहां पर भी दिया हुआ है VG और VD बराबर हो गए। Now when the gate is connected to a drain, guys, when the gate is connected to drain, what is the information given here? This VDD, it is given 5 volt only. This is a very high voltage. This VDD is given as 5 volt. This 1 kilo ohm resistor is given. Definitely it is not in cutoff, because if it is in cutoff, there will be no current. So this is 5 volt, this is 5 volt, this is 5 volt. And this is more than what VTH. In that case, you can assume let it is in cutoff. Let MOSFET in cutoff. Cutoff. In that case, ID will become 0. So VD will become VG is equal to what? VGS is equal to what? VDD, 5 volt. And this is greater than what? VTH. And that's why it is not in cutoff. Our assumptions is wrong. Now, once the gate is, now there are 2 reasons, guys. One is what? Triode, and one is what? Saturation region. Not in cutoff means one is triode, one is saturation. Right, this diagram is given. 1 kilo ohm. VDD, it is given as a 5 volt. Once the gate is connected to what? Drain. So always remember, this is the source is connected to ground. This voltage is what? VGS. This voltage is what? VDS. Since VD is equal to what? VG, means VDS is equal to what? VGS, right? When both are equal, so VGS minus VT, definitely this value, when we are subtracting something from that, it will become less than what? VDS. It means VDS is greater than VGS minus VT. When we are subtracting something, it will become lower value, it will remain higher value. This condition is satisfied, means it is in what? Saturation region. Saturation region. Okay. Now, if it is in saturation region, what is the, now we want what? Actually, we want the VDS or VGS. Same thing, because VDS is equal to VGS is equal to what? VG. Why? Because
S is 0 and that's why it is Vg. We have to calculate the Vg. We have to calculate the VGS. Now VDS is equal to VGS is equal to, what is the current here? ID. What is the current enter into this? 0. So you can say VDD minus ID into RD, that is 5 minus 1 times of ID. This is the equation number 1. From this, VDS or VG is equal to VDD minus ID into RD. So what is the VDD? 5 minus ID. And second, it is in saturation. So IDS is equal to half of K and S, that is the mu and cu x, W by L, VGS minus VT the whole square. VGS minus VT the whole square. We have no value of the ID. So you can replace the ID or you can replace the ID. What is the ID from this? ID is equal to 5 minus VDS. 5 minus VDS or 5 minus VGS. Right here. 5 minus VGS is equal to half of K and S W by L. What is the K and S W by L is given? Mu and cu x, 2 milliampere. So 2 milliampere. Give me 1 minute. Now remember guys, this is what 5 minus VGS. So this is the replaced by half of K and S W by L. It is given in the question 2. So it is 2. VGS, it is given as, VGS is not known, we have to calculate. VT is given as 1 whole square. VT is given as what? 1. Now because ID is replaced by what? This formula. This one. This is the important equation. This is the second equation. This is the third one. Put the 3 into 2. You will get 3 into 2. You will get the 5 minus VGS. This 2 cancel out. You can write 5 minus VGS is equal to VGS square minus 2 VGS plus 1. Quadratic equation. Now on the right hand side, it will become VGS square minus VGS, because it will become plus. This will become minus 5 plus 1, 4. That is equal to what? 0. Now you can calculate the value of the VGS, guys. I think it is a numerical answer type question. 1 minute. Answer. Yes. Okay. Then calculation, very, very important part, guys. Once you have the quadratic equation, guys, then calculation is fine. Yes. 1 minute. Okay. Now we have, if it is possible to calculate the roots, then okay. Otherwise, what you can, what are the roots? Minus b, it will become minus b, plus minus root over b square, 1 square, minus 4ac, minus plus 4 upon 2a, upon 2a. So what is the answer here? 1 plus minus root 5 upon 2. 1 plus minus root 5 upon 2, guys. So this will become 1 plus root 5 upon 2, 1.61. Because when we are putting the negative value, this will give you the negative. But once you are going to get the negative value, guys, negative value will be the less than the VT. Always remember VGS should be greater than what? VT. And that's why that will be the answer. And what was the answer, guys? What was the answer? I think, give me 1 minute. I have the answer for this question.
Yes, 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 yes. It was the numerical answer type question. It was the numerical answer type question. No, 1 minute. Give me. So tell me, guys, what is the answer? 1 minute calculation is question number. Question number. Which one is the question number? What is the answer provided by the gate 60? 2.50 to 2.60 it is given, na? 2.50 to 2.60. So calculation, we will do our proper calculation. Yes, 1 minute, wait for that. Okay, then guys, VGS square minus VGS minus 4 AC. So it will become, this is the calculation mistake here. Everything is fine, just be careful about the roots, guys. When I am going to calculate the root, VGS is equal to minus B, it will become plus 1 plus minus root over B square. What is the B square? 1 minus 4 AC minus minus plus. This is the 4 square. 4 into 4, that is the 16 upon 2A. So it will become 1 plus minus root over 17 by 2. Now we have the two answers. Root 17 plus 1 divided by 2, 2.56. Or if you are going to take the minus sign, root 17 divided by 2, you will get the minus 1.56. But it is less than the VT, and that's why this is not the answer, this is the answer, 2.56. And what is the answer given in the question? 2.50 to 2.60. So this is the correct one. 2.50 to 2.60. Up to 2 decimal places, it is the 2.56, guys. 2.56. This is the answer for your question. Okay, this is a very, very important one. Saturation region, right? You can solve saturation region. Now, next question. ये भी MOSFET पे आ गया, ये operational amplifier. Okay then. Consider an ideal op-amp circuit as shown in the figure. Resistance R1, R2, R3, R4, all the resistors are equal. यार जब भी ऐसा देना R1, R2, R3, R4, तो R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to what? RE हो गया. That is equal to what? 50 kilo ohm. All are equal. The magnitude of the closed loop gain. My dear friend, it is a special case of what? Operational amplifier, inverting operational amplifier. Already number of times we have solved this question. So I am just redraw the diagram. This is the operational amplifier. All the resistors are equal. Very simple. Now, this is the one resistor R. This is the another resistor R. This is the another resistor R. This is the another resistor R. All are equal. This is R. This is R. This is R. This is R. This is connected to ground. This is VI. What is the closed loop gain is required? Ideal op-amp is given. Magnitude of the closed loop gain. Only the magnitude is required means positive answer. Okay, no problem. Virtual short concept. This is 0. This is 0. Write down the KCL. Let this voltage is what? Vx. Write down the KCL at this point. 0 minus Vi upon R plus 0 minus Vx upon R. R cancel out and you will find that Vx is equal to minus of Vi. Vx is equal to minus of Vi. This is the first answer. Second, write down the value here. So Vx minus 0 upon R. Vx minus 0 upon R. Plus Vx upon R. Vx minus 0 upon R. Plus Vx minus V0 upon R is equal to what? 0. Vx minus V0 upon R is equal to what? 0. R cancel. 3Vx minus V0 is equal to 0. So what is the V0 is equal to 3Vx. Now what is the value of the Vx? Minus of Vi, and that's why it will become minus 3Vi. What is the answer? V0 upon Vi. That is equal to what? Minus 3. And that is the answer for your question, guys. That is the answer for your question. Minus 3. Minus 3. Numerical answer type question or this is a 1 minute question number 62.
The range of the answer given in the question is 2.90 to 3.10. बिल्कुल सही, because only the magnitude is required 2.90 to what 3.10. So normally in JOS, right, हम क्या करते हैं, excitation mean excitation we are writing the -3, but remember guys, only the magnitude is required, then put the value 2.90 to 3 point means you have to put the value 3. Only the magnitude is required. Now we have the shortcut to solve this question. Again, another method to solve this question. For example, if you want to solve, always remember, because all the resistors are equal, let this will give you the current I. Voltage at this point is fixed. This resistor is equal, this resistor is equal, this is grounded, this is virtual grounded, same potential. That's why this current will become I by 2, this current will become I by 2, this current will become I by 2. Now my dear friend, you can write the KCL from this point to this point. In one step you will get the relation between that. So what is the relation? V0 is equal to IR plus I by 2R, right? V0 is equal to IR plus I by 2 into R is equal to what? That is 0. So now you can get the relation. I is equal to, this is what, 3 by 2 R into I. So this will become 2 by 3 R into V0. This is the value of the I. Okay. Now what is the VI? Yes, you can write that VI is equal to, this is the 0 minus VI. 0 minus VI is equal to I by 2 into what? R. Or you can write here, this is the V0, this is the VI. So VI is equal to minus IR by 2. This is the V0. This is the VI. V0 upon VI. I cancel, R cancel, 2 cancel, you will get the answer -3. That is the another method to solve this question. But again, magnitude. So simple, from this side, current I. At this node, same resistor here, current divided into two parts, I by 2, I by 2. Write down the 1 KVL at this point or 1 KVL at this point, get the V0 in terms of I, write down the 1 KVL, get the VI in terms of I, divide it and you will get the answer, -3. This is the another method. So this type of questions we are discussing in the class guys, this type of questions. Last question from the analog, last but not the least question guys, this is the question from Clipper. Okay, what is the question here? Already in my practice session already have given, sometimes they will ask the maximum or minimum value. Consider the ideal diodes D1 and D2 as shown in the figure with the cut-in voltage V gamma 0 volt and VI is in volt. V gamma cut-in voltage 0 volt, VI is in volt. This is in volt. Means it is an ideal diode guys. Cut-in voltage ideal diodes with the cut-in voltage 0. The maximum voltage of the output voltage. When we have to find the maximum voltage, always put the maximum value of the input guys. When I am going to put the maximum value of the input, this is what is the maximum value of the input here? What is the V maximum? 6 sine of omega t. So what is the maximum value? 6 volt. This is the 10 kilo ohm. This is the 10 kilo ohm. This is the D2. This is the D1. Now because it is positive and it is more than what 2 volt. 6 volt, because it is positive and it is more than what 2 volt, and that's why we can assume D1 is on. Right, we can assume. Now here on the positive side negative voltage is connected. On the positive side negative voltage is connected. एक सेकंड रुकिएगा. Okay, this is the 6 volt guys. So this is when maximum, this is the D1 is on. What about this voltage? It is connected to positive terminal. This is the negative voltage 4 volt, and that's why this diode is what off. This diode is off because it is a negative voltage, and it is a positive, it is a negative. Let D2 is off. Right? Once you have the on off, make it what? Because it is an ideal diode, it will act as open circuit. Remove this battery. It will act as what? Short circuit.
Now this is the question from the network. If it is the question from the network, this is the V0. Write down the KCL. V0 minus 6 by 10 plus V0 minus 2 by 10. V0 minus 2 by 10, V0 minus 6 by 10 is equal to 0. 10, 10 it will become 0. 2 V0 minus 8 is equal to 0. So what is the V0 is equal to 8 by 2. That is equal to what? 4 volt. So we are getting the maximum voltage is what? 4 volt. This is the question number 65. And this is what answer is what? 4 volt for this particular question, guys. Or you can verify. This diode is forward bias, means the current should be what? Positive. Definitely the current will be positive. What will be the current? Maximum 6 minus 2 upon 20. This current is positive. Now what is the voltage at this point? 4 volt. That we are getting the output voltage 4 volt. This is the positive side. Negative side it is 4 volt. Positive side it is minus 4 volt. It is reverse bias by 8 volt, guys. So yes, definitely it is reverse bias, and that's why the answer for this question is what? 4 volt. The range is given as 3.7 to 4.3. Range is given as 3.7 to 4.3. Okay, तो ये है कहानी. Now 3.7 to what? 4.3. So this is about what? Analog, right? This time the paper was very good, right? Very conceptual question. Now, thank you for attending the session, guys. Thank you very much. For detailed analysis, guys, we got the conceptual questions from what? EDC, conceptual question from analog. If you want to solve more questions, or if you want to start your journey for GATE 2027 and 2028, now you can join now, guys. Thank you for watching this session. Thank you. Now let's move to question number 12. This question is from EMFT. And the question says that we have a surface z square equal to 2x square minus y square. On this surface there is a point P, and on this point P we need to find normal unit vector. Now how to find this normal unit vector? Okay, so what we can do is first let's say that this point P represent the position with respect to origin. So the location of this point P with respect to origin is 1, 0, root 2. At this point we need to find normal unit vector. So what we can do is at this point we can take the gradient of this surface function and divide it with its magnitude. Take this z square on this side, so it will become a 2x square minus y square minus z square equal to 0. This is the equation for the surface, and let's say that this is some scalar function f. Okay. At this point, if we need to find the unit vector, then that will be equal to gradient of f divided by the magnitude of this gradient of f at this particular point P. Now what is the gradient of this function, this scalar function? The gradient can be written as 4xi cap minus 2yj cap minus 2zk cap. Okay, so if you put the value of x, y, z, then it will become 4i cap minus 2 root 2 k cap. Okay, now what is the magnitude of this? The magnitude of this gradient function is root 24. Now you can find this unit n vector, unit normal vector. Okay, so that will be 4i cap minus 2 root 2 k cap divided by root 24, and if you simplify it, then you will get answer Delhi. So this is again a very simple problem. Let's move to the next question, and next question is I think question number 21. Okay, let's move to question number 21. Okay, so in this question there is one equation, and the equation is provided to us. PR equal to PT GT GR lambda square divided by 4 pi d square. So this is Friis equation, and PR and PT are the received and the transmitted power. GT and GR is the gain of the transmitting and receiving antennas, and D is the distance between them. Lambda is the wavelength of you can say wavelength in the free space. Now GT, GR and wavelength are provided to us. PT is also provided and PR is also provided. We need to find D in kilometers. So what we can do is we can convert this equation into dB. Since the unit is power, so when we convert power into dB, then we have to take 10 log. Okay, so if I take 10 log on both sides, then this will become 10 log PR
and this will be equal to 10 log PT plus 10 log GT plus 10 log ZR plus 20 log lambda. Okay, where 2 will come out. Okay, so it will become 20 log lambda minus 20 log 4 pi d. Since GT is 1 and ZR is 1, so it will become 0. 10 log PR is given as minus 90 and this is given as 10 dB plus 20 log lambda is 0.3 and minus 20 log 4 pi d. So if you calculate d from here, then I have already solved it for you, then it will come out to be 3 into 10 raised to power 4 meter divided by 4 pi. Since the answer asked is in kilometers, so we have to convert this into kilometers. So it will become 30 upon 4 pi kilometers. And you can simplify it with 15 upon 2 pi kilometers. Okay. So this is the correct answer and the answer is Bombay. So I hope you understood it. Let's move to the next question. And next question is, let me see the question number. I think question number 24 is the next question. Okay. Let's move to next question. Question number 24. In this question, there is an electric field is given, and this electric field is in homogeneous medium. It has two components, the X component and the Y component. Okay, so let me separate the two components. First, write X component. X component is E0. I can convert this cos into sine because the Y component is given in sine, so it will be better to convert this into sine as well. So E0 sine of omega t minus kz plus 90. Okay, whenever you convert cos into sine, then this will be the case. You have to add 90 to it. And the Y component of the electric field is E0 sine of omega t minus kz. Okay, now you can see that the X component, the Y component both has the same magnitude, but there is a phase difference of 90. So obviously the polarization will be circular. But the question is whether it is right circularly polarized or left circularly polarized. I mean, these two options may be correct. These two are wrong. Okay. Now, how to check whether it is left circularly polarized or right circularly polarized? For that, what we can do is, let's say that this omega t minus kz equal to theta. So what we can do is, we can write this X component as E0 sine of theta plus 90 and the Y component as E0 sine theta. Okay. Now this direction is I cap, this direction is J cap, and the upward direction is K cap. These two waves are traveling in Z cap direction or K cap direction. When you take t equal to 0 and Z equal to 0, it means we have fixed the position Z equal to 0, and let's say the time is also fixed at t equal to 0. So if we take t equal to 0 and Z equal to 0, then theta will obviously become 0. If theta is 0, then X component has the maximum value and the Y component has 0 value. So if I write the resultant electric field, the resultant electric field has only X component when you take Z equal to 0 and t equal to 0. And that resultant electric field can be represented here. This is the resultant electric field at t equal to 0, Z equal to 0. Now let's fix the position at Z equal to 0 and vary the time. If I vary the time, keeping the location fixed, after some time this will become 90 because t is changing. Now Z is taken as 0, t is changing, so obviously this omega t will change. Let's say after some time this will become 90. Okay, if you take theta as 90 degree, then this X component will become 0 and the Y component will be maximum. It means the resultant electric field will move from here to here, but the magnitude will remain same. Okay, the resultant electric field will move from I cap to J cap. It means it is moving like this. When the resultant electric field is moving like this. Okay, it is moving like this. Okay, if I fix the position and change the time, then the resultant electric field will change with time. Okay, the resultant electric field direction will change like this. Okay, so obviously it's a circularly polarized. Now which circular polarization is there? Since it is propagating in Z direction, so take your thumb in the Z direction, take right hand and left hand both, thumb in the Z direction and rotate your fingers. If you rotate the fingers, then if you look at the right hand and if you rotate it, then the rotation is in anti-clockwise direction. And here also the electric field is rotating in anti-clockwise direction. It means
this rotation is matching with the right hand circulation, okay, not the left hand, because the left hand, in the left hand, if you take thumb in the propagation direction and rotate your fingers, the fingers will rotate in clockwise direction, okay. So that's why it cannot be the correct, because actually the electric field direction is rotating anti-clockwise. So that's why the right hand shows the actual rotation. That's why it's right-handed, circularly polarized. Answer is Agra. I hope you understood it. Let's move to next question, question number 28. Let's move to question number 28. Okay, question number 28. Okay, now in question number 28, the question is about dielectric loss tangent. Okay, so tan delta is asked. So how to find tan delta? Tan delta can be written as the imaginary part of permittivity divided by the real part of the permittivity. Real part of permittivity. There is one more expression for this, and that is magnitude of real part of current density divided by the magnitude of imaginary part of current density. This is also the formula for loss tangent. Now let's first come to this thing. Let's assume that in general the medium is conducting. If the medium is conducting, then according to Maxwell's equation, I can write as curl of H equal to sigma plus j omega epsilon into E. Okay. Now what we can do is we can take this j omega out. This will become epsilon plus sigma by j omega E. So you can say that in the conducting medium, this is the net permittivity, and it is complex, minus j sigma by omega. This is the complex permittivity, okay. And for this complex permittivity, we can calculate tan delta. So tan delta will be equal to, obviously I have to take the magnitude of imaginary part, okay. So it will become sigma by omega epsilon. For a conducting medium, this is tan delta. But the problem is this is not given in any option. So that's why we have to look option wise. First option is the ratio of the real part to the imaginary part of total displacement current. Now what is this displacement current? The displacement current density is del D by del T. Whether you take a displacement current or displacement current density, nothing will change. Why? Because we have to take the ratio of real to imaginary. So that cross section area, if you take this as current density and multiply it with cross section area, then you will get the current, na? But cross section area will not matter in this problem, because we have to take the ratio. If you take the ratio of real and the imaginary part, then that area part will cancel. So better you take displacement current density only, okay, and take the ratio of real to the imaginary part. So what is the real part of this and imaginary part of this? So what we can do is we can write it as j omega d, and d can be written as epsilon E. And let's assume that this epsilon, this permittivity, has a real part and the imaginary part. So j omega epsilon 1 plus j epsilon 2. Let's say this is the imaginary part, this is the real part. So if I multiply it, it will become j omega epsilon 1 minus omega epsilon 2. Or you can take plus or minus, it doesn't matter, okay, because the complex part can be positive or negative. Okay, this is the you can say displacement current density. Now what we can do is, if you take the ratio of real to the imaginary part, this is the real part and this is the imaginary part. So if you take the ratio, then this will become epsilon 2 by epsilon 1. And this epsilon 2 is the imaginary part of the permittivity and epsilon 1 is the real part of the permittivity. So again you will get the same expression for tan delta. It means this is correct. Okay. Now let's move to option B. In option B, it is given like this. So what we can do is we can apply, this formula we can apply for loss tangent. So if you apply this formula, what is the current density? Current density can be written as sigma plus j omega, okay, j omega E, obviously. J equal to sigma E is written, na? In general, j equal to sigma E is the current density. So in general, I can write that this is the current density. If you take the magnitude of the real part, now how to find the real part? J omega epsilon. Okay, how to find the real part? So for that you can replace this
epsilon into epsilon double prime plus j epsilon prime, like this. Okay, and then you can separate the real part and the imaginary part. You will get this answer as well. Okay, the real part, if you calculate the real part of this and divide by the magnitude of imaginary part of this, then you will get the same expression. But there is a problem here. I mean, IIT has provided this option as well, but I don't think that this is correct. Why? Because in this option, epsilon prime and epsilon double prime are not mentioned. Which one is the real part, which one is the imaginary part, we are not sure. Okay, in the problem, these epsilon prime and epsilon double prime has to be mentioned. Okay, that's why I'm not going with this option. Okay, I'm not going with this option, but option is provided this, and this option is only correct if you take epsilon double prime as the real part and the epsilon prime as the imaginary part of the permittivity. So then only you can say that this option is correct. Otherwise, we have to, I mean, we can challenge this option. Only A option is correct. Okay, so this will be the question number 28. Let's move to the next question, and next question is question number, please wait, and the next question is question number 33. Okay, let's move to question number 33. Yes, question number 33 is given as there is a rectangular waveguide and the dimension of the rectangular waveguide is provided to us. For T10 mode, we need to find the cutoff frequency. So it's again formula based question. The cutoff frequency is given as 1/2 pi. Since the medium is filled with air, so you can say that mu naught epsilon naught root of m pi by a square plus n pi by b square. Okay, since m is equal to 1 and n equal to 0, so what you can do is you can remove this and it will become 1/2 pi a root of mu naught epsilon naught into pi by a into pi. Okay, a is taken out, so I can write this, I mean this is pi only and this pi will cancel. Okay, so it will become 1/2 a root of mu naught epsilon naught. Now this 1/mu naught epsilon naught is 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 2a. A is in inches, 0.28 inch. So I have to convert this inch into meters. Okay, so you should know how to convert this inch into meters. If you don't remember it, you cannot solve this problem. Okay, even I don't remember, so I have to go to Google and then ask Google about this inch and meter relation. So 1 inch, please check it, 1 inch is I think 2.54 into 10 to the power minus 2 meter. Okay, so if you put this value here, I mean convert this into meter, 2.58 into 10 to the power minus 2, so you will get the frequency, and that frequency can be converted into gigahertz. So the answer comes out to be, I mean from my calculation, the answer I got is 21.09. okay, 21.09 gigahertz is the correct answer. You can solve it yourself and check it whether the calculation is correct or not. I think this calculation is correct. Let's move to next question. Next question is question number 23 to the question number 34, and let me erase this part so that I can get some space for the solution. Okay, in this question, I mean this question number 34 is based on scattering parameter, and it is given that for a lossless passive two-port network, S11 and S21 intersect at minus 3 dB, and for lossy two-port network is they intersect at this point. Okay, I mean at this point, at this value, both S1 and S21 are equal. Okay, there is a relation in S parameter, and that relation says that if the incident power in a lossy two-port network, if I take the incident power as 1 per unit, okay, then this 1 has to be S11 mod square plus S in per unit form, okay, plus P dissipated. This is the fraction of the power which is incident at port 1, and this is the fraction of the power reflected at port 2, and this is the dissipated power. Okay, so please remember this. S11 is the fraction of power reflected at port 1, this is the fraction of power reflected at port 2, and this is the power dissipation. So it's a power conservation equation, you can say. Now what is S11 and S21? So S11 and S21 are equal, and how to calculate this? It is given as minus 4 dB. So what you can do is 20 log
S11 is equal to, you can say, or you can say mode of this equal to 4 dB. Okay, so from here you can calculate S11 and S21. So I have calculated an S11 equal to S21, and it comes out to be, let me tell you my relation. It comes out to be 10 raised to the power minus 4 by 20. Obviously, if you take, I mean, if you don't take, okay, it is given as minus 4, na? So that's why. Okay, so it will be like this, and if you take the square of this, then the square of this will come out to be 0.398. Mode square equal to S21 mode square, it comes out to be 0.398. okay, so if you put this value into this relation, so you'll get P dissipation is equal to, if you put this value, then it comes out to be 0.2037. okay, and if you multiply it with 100, you will get the power dissipation in percentage, so it will become 20.37%. okay, I hope you got the point. Let's move to the next question. Next question is question number, let me see, question number 52. Okay, question number 52. Let's move to question number 52. So this question is from transmission line, and in this question it is given that a complex load is represented by, on the Smith, because on the Smith chart the point is represented with the reflection coefficient. Okay, so on the Smith chart complex load is represented like this. Okay, the angle is 30 degree and the magnitude is 0.5. okay, a coaxial cable with characteristic impedance of 50 ohm is connected to the load. The new input impedance of the load now moves to a diametrically opposite point on the same gamma circle on the Smith chart. Okay, so it moves to this point. Okay, if we connect some load and then we see from some length, then this will be the, you can say, reflection coefficient. So reflection coefficient will become 0.5 at an angle of, you just subtract 180 to it. Okay, so it will become minus 150 degree. This is the reflection coefficient. What we need to find is which option is the nearest input impedance of the cable connected load. Okay, we need to find the input impedance of the cable connected load. Okay, the load is connected, we need to find the input impedance at this location. When the reflection coefficient has become this value, has achieved this value, then what is the input impedance? So what we can do is we can apply this relation. Input impedance is equal to 1 plus gamma L divided by 1 minus gamma L. Okay, this is the expression which we can apply. So we can put this value of gamma L and then calculate the ZL value. Obviously multiply by Z0 I have to take. Okay, because this is the normalized value if you don't take Z0. So you have to multiply it with Z0, and if you calculate this, you will get the answer B. Option B is correct. Okay, so these were the questions from E of T. I think there were 6 to 7 questions, and all the questions were easy. So that's all for EM of T. Thank you. Yes, so hello everyone. Here we will solve the control system problems which has been asked in Electronics and Communication branch GATE 2026. Okay, so GATE 2026 में जो भी कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं EC ब्रांच में, आइए बात करते हैं एक एक क्वेश्चन का. सो स्टूडेंट, ये देख सकते हो आप मास्टर पेपर क्वेश्चन नंबर 19 कंट्रोल सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्टली गेट PYQs बुक से आया है. अगर आपने गेट के कंट्रोल सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपने इजीली कर दिया होगा. तो आइए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है 1/s+4 1/s+4, और दोनों का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे फॉरवर्ड हो रहा है. मतलब ये कि 1/s+4 प्लस के साथ और 1/s+4 माइनस के साथ 0 आ जाएगा. तो अगर किसी भी कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक ब्रांच में अगर 0 हो गया तो फाइनल आंसर जो ट्रांसफर फंक्शन बचेगा वो आपका केवल ये रह जाएगा 1/s+4, and this is C of S and this is R of S. और एग्जामिनर पूछ रहा है अल्टीमेट ट्रांसफर फंक्शन, सो अल्टीमेट ट्रांसफर फंक्शन विल बी CS upon RS is nothing but 1/s+4 only, and which is available in which option. Let's see 1/s+4 कौन से ऑप्शन में अवेलेबल था. यहाँ आइए देख लेते हैं. तो आई होप आपने ये रिकॉर्ड कर लिया होगा. मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ वापस से. 1/s+4 अवेलेबल इन द ऑप्शन नंबर बी. करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉब. चलिए, ये तो था इसको बेटा शॉर्ट ट्रिक. अगर हम बात करें इसी का कन्वेंशनल अप्रोच, अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन का कन्वेंशनल अप्रोच कैसे हो जाएगा. अगर आप कन्वेंशनली सॉल्व करना चाहें इसको तो यहाँ पे आप नोड का नाम दे दीजिए x1 x2,
this is your x3 and this is your x4, because while making the SFG from the block diagram, each and every summing point and take off point will behave as a node only, that we all know. तो अगर मैं इसको कन्वेंशनली सॉल्व करना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा नोड बना सकता हूँ, सर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये यहाँ पे x4 है, दिस इज योर CS नोड. ये कन्वेंशनली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका नीड है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम क्वेश्चन निकाल चुके और गेट में भी आपको वैसे ही करना चाहिए था. अब देखो यहाँ पे x1 और x2 के बीच में कुछ नहीं है तो क्या आ गया 1, x2 और x3 के बीच में क्या आ जाएगा, इट शुड बी 1/s+4 सर. आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट you will see here कि sir here x2, when you will connect x2 to x4, when you will connect x2 to x4, you will get what, minus का 1/s+4. Yes sir, minus का 1/s+4. And you can connect x4 to this, you can connect x4 to this also and you will get -1. Is this crystal clear? Yes. Now student, can you please tell me कि how many number of forward path? Forward path, we have only one forward path from RS to CS we need to travel, so we should write 1/s+4 in the numerator. This is P1 del 1 upon del. So now we are completed with P1. Now del 1 should come here. Before that del will come. Del means all the individual loop gain. Tell me how many loop gain. Don't you think this is first one? ये पूरा 1/, ये भी node है यहाँ पे, node है. So this is the connection and this is the direction. This is the direction and this is +1 by the way. तो ये पूरा यहाँ से आके माइनस का आएगा. Yes sir, माइनस का. So one loop is माइनस का 1/s+4. Okay sir. Second loop gain is +1 माइनस का 1/s+4 again minus. So minus minus plus, minus plus 1/s+4. Both are the individual loop gain only. There is both the loops are also touching loops, so there is no scope of two non-touching loop gain here, है ना. तो केवल यहाँ पे individual loop gain थे, both are cancel out. Now we are left with del 1. Del 1 कितना है 1. Del 1 is that value of del obtained by removing all the touching loop from the first forward path. तो यहाँ पहले forward path को दोनों ही loop gain touch कर रहे हैं, so that is why अगर हम del 1 की कैलकुलेशन करेंगे तो भी 1 बचेगा. तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो आएगा CS/RS, your final answer is nothing but 1/s+4, which is actually available in the option number B only. I hope this is crystal clear. I hope this is crystal clear to everyone. Yes, चलिए. तो I think यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको. यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है. That's correct. चलिए. Now student will go for the next. अगर हम अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जब जाएंगे तो ये शायद वापस से चलिए हट जाएगा. चलिए कोई बात. अब क्वेश्चन नंबर 19 हमने सॉल्व कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. नाउ वी शुड गो फॉर क्वेश्चन नंबर 40. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे. आइए, सबसे पहले अभी हम कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम सिग्नल सिस्टम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. तो अभी अभी हम सीक्वेंस में हमारा कंट्रोल सिस्टम सारे सॉल्व कर लेते हैं. कंट्रोल सिस्टम इसके बाद आएगा. क्वेश्चन नंबर 40 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. 65 आ गया है तो थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा सर वापस. तो क्वेश्चन नंबर 40. ओके, लेट्स सी विच क्वेश्चन हियर. है यहाँ. क्वेश्चन नंबर 40 पे आना है हमको. तो क्वेश्चन नंबर 40, 41 और 59. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम के हैं, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से. इसके बाद हम सिग्नल्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हम लोग कर रहे हैं. सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ कर रहे हैं. ठीक है, ओके. सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41. सो हियर 42, दिस इज 41 and here we have 40 and here we have 40. देखिए गिवन डेटा हम लिख लेंगे और साथ साथ में सॉल्व करते चलते हैं. चलिए आइए, ये क्वेश्चन था आपका. यस सर. चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 41. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 41. जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग गाइस? अगर मैं यहीं पे चले पेन ले लेते हैं ताकि ये पार्ट रह जाएगा आपका, अदरवाइज चलिए रिमूव हो जाए. ठीक. So now student, tell me, question is saying that for a control system shown in the figure, transfer function has a plant. This is the plant transfer function. Okay, GS equal to, okay sir. And here this is C of S also given to us. Okay, we have to find out where K and alpha are the positive values. Okay, which value of K and alpha represent the correct closed loop system poles? So closed loop system का pole आपको given था. Closed loop system का pole given है sir. Okay. The first thing is you should write the characteristics equation that will provide you the closed loop poles. So closed loop pole क्या होता है? The roots of characteristics equation. Characteristics equation मतलब क्या होता है? Closed loop pole, it means we should write 1 plus G of S H of S equal to 0 here.
I hope you guys agree with me. Shall we write like this 1 plus g of s h of s equal to 0 प्यारे बच्चों? चलिए अगर आप थोड़ा सा मैं इसको टाइम दें तो मैं इसको शायद इसी से लिखता हूँ, वही हमारे लिए बेटर रहेगा ताकि हम उधर भी लिख पाएंगे शायद. यस, तो चलिए मैं वापस लिखता हूँ बच्चों. तो लिखना चाहिए हमको 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0, है ना. तो जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो व्हेन यू विल राइट दिस यू शुड गेट व्हाट 1 प्लस जी ऑफ एस वैल्यू इज व्हाट. तो जी ऑफ एस वैल्यू इज नथिंग बट 1 अपॉन s plus 1 and s plus 2. This is your g of s. Now student, tell me, when you will write 1 plus gs h, this entire term will become as a forward path parameter. So these two box should be multiplied and hs is anyway 1. So ultimately what I need to do? I need to do gs into cs actually. So this is already gs. What is cs? Even if you wish to write, you can write as well 1 plus g of s dot co, because here this entire g of s into c of s is working as a hs तो 1 है equal to 0. This entire working as a OLTF. OLTF मतलब whenever two blocks are in cascade, we have to take the product. So that is why it is. So now it is equivalent to, now we should multiply with CS as well. What is CS? So CS value is nothing but k into s plus alpha and equal to 0. K into s plus alpha equal to 0. So when you will write the characteristics equation, what you will get? You will get s square plus 3s plus 2 plus ks plus k alpha equal to 0. I hope this is crystal clear. So now student, tell me, when you will write this equation, you will get s square plus, here tell me, can we take common in s coefficient? Yes. So when you will take common in the s coefficient, you will get 3 plus k. Okay, 3 plus k, and here you will get 2 plus k alpha. 2 plus k alpha equal to 0. 2 plus k alpha equal to 0. I hope this is clear. Simply we just did the characteristics equation. We just took the LCM, or the when you will take the LCM, you will get s square. यहाँ पे s आपने बाहर निकाल दिया 3 plus k, and here is 2 plus k alpha. And one more pole equation is given to you, that is s equal to s1 s2 equal to minus 3 plus minus j root 5. अगर ये रूट का इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन डिजाइन कर सकते हो क्या? यस सर. सर इक्वेशन पक्का ऐसा रहा होगा s plus 3 का होल स्क्वायर and plus 5 equal to 0. क्योंकि अगर ये इक्वेशन होगा, then only we will get this root. Then only we will get this root. You can even hence prove also open this. So when you will open s plus 3 equal to s plus 3 का square equal to 5, s plus 3 equal to plus minus का j root 5, and s equal to same आ जाएगा. Yes sir. So just open the brackets, a plus b whole square. So a square plus b square twice ab. Twice ab means 6 of s, and b square means 9, and 5 equal to 0. Yes sir. So ultimately you should get s square plus 6s plus 9 plus 5 14 equal to 0. 9 plus 5 14 equal to 0. Is this clear? Yes. So now student, you can see. Now you can see again. Sir, we have this equation. Suppose that this is equation number 2, and suppose that this is equation number 1. So now we are looking for the constant. Na? So just made the equation number 1 only. This is equation number 2. Just compare the coefficient. The moment when you will compare the coefficient, you will get 3 plus k equal to 6, because by comparing the s coefficient, you will get this. And second, from here only you will get k equal to 3 only. Yes sir, k equal to. Second is 14 equal to what? Just compare this. So it will 2 plus k alpha. Okay sir. So 14 equal to 2 plus k alpha, where k you know, k is 3 sir. So what you will get, sir, here 14 minus 2 is nothing but 12, and put the k value 3 alpha. So alpha equal to what? 3 4 are 12. 3 4 are 12. Examiner is asking for k and alpha respectively. K and alpha respectively, मतलब first k value will come. So first k will come, then alpha will come. Answer will be 3 and 4. Correct answer will be 3 and 4. The final answer for this question is 3 and 4. I hope this is crystal clear. I think this question also we guys completed. Is this clear बेटा? Yes sir, completed, absolutely perfect. चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ. ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया. This is also easy question. Now coming to the question number. Just coming to the question number 41. 40 question we solved. 41 पे चलते हैं. आइए. So if I talk about question number 41, just see this question. Or even you will write the write this, because this question is lengthy na, so better we will write the data on the next. So here is A, B, C matrix is given to you. A, B, C matrix is given, sir. And examiner is asking for the simply transfer function. Okay. So these types of question we already solved multiple time. बच्चों classroom के अंदर बड़ा easy question था.
So here you need to solve C dot as a transfer function formula is C dot Si minus A inverse, C dot Si minus A inverse dot B plus D. D matrix is 0 given. So transfer function formula will limit to what? Will limit to C dot Si minus A inverse dot B only. C dot Si minus A inverse dot B only, guys. So ABC matrix are given to you. So better I will go to the blank slide only. If I want to take blank slide here, so let me go there, blank slide. चलिए ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं. Okay guys, so let's go to the blank slide. So here I will write the given data first of all. What is the given data? So if I talk about the given data, A value is minus 4, minus 1.5, 4 and 0. Okay, so you can write the A matrix first. A matrix which is given to us is nothing but minus 4, minus 1.5, okay, minus 4, minus 1.5, 4, 0, minus 4, minus 1.5, 4 and 0. This is the A matrix, okay sir. B matrix is also given to us, क्या check कर लो, 2, 0, okay sir, 2, 0, okay, sorry, 2, 0. B matrix is 2, 0, okay sir. And C matrix is also given to us. What is the C matrix? C matrix is 1.5 and 0.625. 1.5 and 0.625. Okay guys, so this is ABC matrix given. Again check the A matrix. Minus 4, 4, 1, minus 1.5, 0, minus 4, 4, minus 4, 4, 1, minus 1.5 for 0, minus 1.5 for 0, 2, 0, 1. Okay, perfect है, perfect sir. चलिए आगे चलते. Now student, we have to find out the transfer function, and transfer function CS upon RS formula is nothing but C dot Si minus A inverse, C dot Si minus A inverse dot B. This is the only formula, guys. This is the only formula we have to follow. So this is the formula, sir, we need to apply. So just apply this formula. Apply this formula, guys. सबसे पहले Si minus A निकाल देते हैं सर, निकालिए फटाफट Si minus A. So when you will apply Si minus A, okay, you know that this is S0, 0, S because Si, so that is why identity matrix Si minus A. A means what? Minus 4, minus 1.5, 4 and 0. I hope this is crystal clear, beta. I hope this is crystal clear. The moment when you will write this Si minus A, you will get what? You will get here S minus, so it will be S plus 4. Then 0 minus, so it will be plus ka 1.5. Then it will be 0, 0 minus ka 4, minus ka 4. And it will be S only. Just again check. Yes, sir, minus minus plus 4, plus ka 1.5. And again 0 minus 4, minus 4. And S minus 0, S only. So this is Si minus A only. Now we are looking for Si minus A inverse. Okay. So shall I write like this? Si minus A inverse लिखना है सर हमको. So Si minus A inverse is nothing but adjoint upon determinant. और देखो 2 cross 2 मैट्रिक्स से मतलब adjoint निकालने का ट्रिक होता है. What is the trick? Trick to find adjoint it was, guys. यहाँ पे आपको इंटरचेंज करना है और इनका केवल साइन चेंज करना है. So इनको इंटरचेंज करेंगे, you will get S here, you will get S plus 4 here. Correct. Now here in change the sign. Change the sign मतलब इनका केवल साइन चेंज होगा, where position will remain same. So minus 1.5 and plus 4. And we have to determine with the we have to divide with the determinant of this. So this is nothing but Si minus A inverse adjoint of Si minus A upon determinant. So when you will write this determinant, you will get actually S square plus 4S plus 1.5 into 4, so it will be 6 only, and having plus sign. So now student, if I just want to save the time, I do not want to write again and again this expression. So let me take this value as X. So I am writing here 1 by X, this denominator value. This value I am just putting as X. Okay, now student, we should multiply with C dot Si minus A inverse into B. Okay, so I will multiply this entire with B also. Okay, so Si minus A inverse as it is, and now multiplying with B also. So this is S, this is minus 1.5, this is 4, and this is S plus 4. And we have to multiply this with B matrix, and B matrix is nothing but 2, 0, guys. B matrix is nothing but what? 2, 0 only. So when you will multiply, what you will get? Let's check. When you will multiply, so रो into column करना है, केवल 1 by x तो बाहर है, और x का वैल्यू ये पूरा है, s square plus 4. So रो into column करिए, s into 2, this into 0, तो ये 2s आ गया क्या? ये सर 2s आ गया. अब बताइए 4 2 जा 8 और ये भी 0 हो गया, तो ये 8 आ गया क्या? 8 आ गया. Now student, we are left with only C multiplication. So C dot Si minus A inverse dot B. जरा बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर जब मल्टीप्लाई करोगे C मैट्रिक्स से 1 by x तो बाहर ही है. C मैट्रिक्स क्या था सर? C मैट्रिक्स था प्यारे बच्चों, ये गिवन था 1.5 और 0.625, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको 2s और 8 से. The moment when you will multiply, what you will get finally,
अगर फाइनली बताओगे आप क्या मिलेगा जरा बताओ यार। So finally you will get, let me take blank slide. So this 1.5 into 2 and this into 0. So 1.5 into 3s हो गया क्या? 3s हो गया. Final transfer function will be 3s plus when you will multiply 0.625 to 8, you will get 5. So 3s plus 5 upon s square plus 4s plus 6. s square plus 4s plus 6. बड़ा ही आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ये सभी का करेक्ट हुआ होगा। आइए देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस में हमको गिवन था। आइए देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस में गिवन था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में था ये। 3s plus 5 अपॉन ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, 3s plus 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s plus 6। ठीक है प्यारे बच्चों, सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका मैच हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लासरूम के अंदर काफी किए हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, 3s plus 5 अपॉन, तो मैंने आपको जस्ट बता दिया अभी, 3s plus 5, करेक्ट। चलिए, तो ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन भी हो गया, बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए और चलते हैं आगे की तरफ। एक और क्वेश्चन है हमारा, ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए अभी, 40 एंड 59 भी देख लेते हैं। ये 59 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। आइए क्वेश्चन नंबर 59 भी देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम बात करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम के क्वेश्चंस का। 59 ओके, सिग्नल के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आने वाला है अभी 58 के जस्ट बाद 59। ठीक है, तो लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन, थोड़ा शायद क्वेश्चन को हम यहीं पर उड़ा देंगे हवा में। जैसे यहीं पे कर लो सर, इस क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन को यहीं पे उड़ा देते हैं हवा में। आइए बात कर लेते हैं हाउ टू सॉल्व दिस। कंसीडर द यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ गेन k एट विच द सिस्टम विल रिमेन मार्जिनली स्टेबल इज, आंसर इज इन इंटीजर न्यूमेरिकली एंट्री क्वेश्चन था ये। ठीक है सर, तो स्टूडेंट एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले राउथ तरतीब बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे तो हाईएस्ट पावर क्यूब आ जाएगा। सो व्हेन यू विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यू विल गेट द हाईएस्ट पावर क्यूब, and whenever highest power is cube and all the ABCD are positive, then we can directly go for BC equal to AD to make the system marginally stable. So for the solution of this, the first thing you should write characteristics equation, that is 1 plus GH equal to 0. G value is given to you, H value is 1. So when you will write this value, you will get 1 plus K upon into S plus 7 and S plus 11. K upon S into S plus 7, S plus 11 is equal to 0. Equal to 0 you will get? Yes sir. Now student, when you will take the LCM, here you will get what? Tell me, you will get S cube plus, tell me, 11. Here is S square plus 11S plus, so when you will do this you will get 18, I think 11 plus 7, yes sir, 18. You will get 18S square. Okay, then next 11 7 ja 77 plus K equal to 0 guys, plus K equal to 0. So now examiner is asking for the marginally stable, so no need to construct the route table. ये 2 marks का क्वेश्चन, गिफ्टेड क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 मार्क डिजर्व नहीं करता। BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD देखो, KM इज नथिंग बट 18 into 77, दैट इज द ओनली करेक्ट आंसर। 18 into 77 अगर आप करोगे तो देखो क्या आंसर आता है। 18 into 77 देखो क्या आंसर आ रहा है, चेक करेंगे, कैलकुलेटर कर लेते हैं। कैलकुलेशन अगर आपके पास है तो ये 1386 आना चाहिए। 1386 आ रहा है क्या? 1386 जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। When you will multiply, you will get 18 into 77. You will get 18 into 77. 18 into 77. 1386. Final answer that you should type 1386. 1386 will be the final answer for this question. Okay, guys. So for the ECE students, okay, for the 2026 gate 2026, all the control system questions we have solved in this session. Okay, we have just solved, and now immediately we will solve the questions from the signals and systems as well. Okay, guys. Yes, guys. So let's solve signals and system problems which has been asked in GATE 2026 Electronics and Communication branch. So ECE students के लिए जो question signals क्या है, आइए one by one उनको discuss कर लेते हैं. So students, when you will see the first question, the Laplace transform of this signal xt. अब ये सिग्नल, ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते थे। आप चाहो तो कन्वोल्यूशन वाले तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो लाप्लास वाले तरीके से कर सकते हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 1 में इधर करूं, मेथड नंबर 1 क्या बोलता है बच्चों कि हमको पता है कि जब भी स्टेप सिग्नल
ये टी, ये जो है रैंप फंक्शन है, रैंप फंक्शन जब भी स्टेप से कन्वॉल्व होगा तो पैराबोलिक नेचर बनाता है। मतलब ये कि टी यू टी कन्वोल्यूशन विथ यू टी विल ऑलवेज इक्वल टू पैराबोलिक नेचर टी स्क्वायर बाई 2 यू टी। और अगर साथ में शिफ्टिंग आ जाए, साथ में शिफ्टिंग आ जाए तो वो शिफ्टिंग फैक्टर भी वहां रिफ्लेक्ट होता है। तो मेथड नंबर 1 मैंने यहां कर दिया, एक्चुअली मेथड नंबर 1 M1 हमने यहां कर दिया, ठीक है। तो टी यू टी कन्वोल्यूशन विथ यू ऑफ टी माइनस का 2 दिया है उसने ना, बिकॉज ये कन्वोल्यूशन जो होता है वो कॉम्पिटेटिव होता है। तो चाहे मैं पहले इसको लिखूं चाहे इसको लिखूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्वेश्चन को एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो वापस ऐसा लिख लो, यू टी माइनस 2 कन्वोल्यूशन विथ टी यू टी। द फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, बिकॉज शिफ्टिंग फैक्टर यहां भी रिफ्लेक्ट होगा, तो इट विल बी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू यू ऑफ टी माइनस 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। yes. और अब आपको ये पूरा कन्वोल निकाल दिया, अब आपको इसका लाप्लास निकालना है। तो बताइए लाप्लास क्या होता है? लाप्लास होता है टी की पावर n का, टी की पावर n का लाप्लास होता है प्यारे बच्चों फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n प्लस 1। और टाइम शिफ्टिंग मतलब सेम साइन विल इन द एक्सपोनेंशियल। अगर टाइम शिफ्टिंग की बात करें तो अगर xt का लाप्लास x ऑफ s है तो xt माइनस टी का हो जाता है e की पावर माइनस टी एस इंटू एक्स ऑफ एस। तो अगर हम ये यूज करें यहाँ तो टी स्क्वायर मतलब स्क्वायर फैक्टोरियल ट्वाइस अपॉन एस क्यूब हो गया, और बाहर 1/2 ऑलरेडी वेट कर रहा है 1/2, और t माइनस 2 ut माइनस 2, इसका मतलब ये कि e टू दी पावर माइनस 2s। तो ये 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आना चाहिए था e की पावर माइनस 2s अपॉन s क्यूब, जो एग्जैक्टली प्रेजेंट इन द ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। अगर मैं आपको शो करूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, e की पावर माइनस 2s अपॉन s क्यूब, e की पावर माइनस 2s अपॉन s क्यूब, ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगर आपको देखना है तो रिकॉर्डिंग में जाके पीछे आप देख लेंगे रिकॉर्डिंग। अभी मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट मतलब ये कि मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2। आइए बात करते हैं मेथड नंबर 2। मतलब अगर डायरेक्टली मैं एक और प्रॉपर्टी लगाऊं डायरेक्ट, मेथड नंबर 2 क्या है सर कैन वी टेक डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म? वी नो दैट कन्वोल्यूशन इन टाइम इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप टाइम के अंदर कन्वोल्व करोगे तो मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो यूटी का लाप्लास क्या होता है? तो यूटी का होता है 1/s, टाइम शिफ्टिंग मतलब e टू द पावर माइनस 2s हो गया, कन्वोल्यूशन की जगह आ गया मल्टीप्लिकेशन। टी यूटी का लाप्लास होता है बेटा 1/s स्क्वायर। तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1 अपॉन s क्यूब डॉट e टू द पावर माइनस 2s। 1 अपॉन s क्यूब डॉट e टू द पावर माइनस 2s मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप चाहे मेथड नंबर 2 से करो चाहे मेथड नंबर 1 से करो, दोनों में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उससे आप सोल्व कर सकते थे। इजी क्वेश्चन था, इजीली आई थिंक सबने सोल्व कर दिया होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिग्नल्स एंड सिस्टम इज क्वेश्चन नंबर 15। yes, so here we have one more question again, it's a very interesting question. Yes, so see this question, what is the question data given that? Okay sir, question saying that 1 marks question, analog signals x1t x2t in are sampled at the rate of fs. Okay, so if fs is given then ts is also given because ts होता है 1 upon fs। yes sir 1 upon fs, तो क्या 1 upon 40 given है? बिल्कुल given है सर। अब आपको x1t and x2t both the continuous time signal or analog signal is given to us, an examiner wants us to find the sampled version, first 10 samples. Okay, so first of all can you please tell me how to convert x1t to x1n? So to convert x1t to x1n we have to replace with t equal to nts. Similarly here x2t, if you want to convert into x2n discrete then you should replace t with nts. Yes. So student, what is x1t? So you will get कि sir x1t value is nothing but cos of 20 pi t, cos of 20 pi t. Yes. So when you will provide here t replace with, when you will replace t with nts, and what is nts value? Ts value 1/40. So what will be x1n? So you will say कि sir x1n is nothing but cos of 20 pi and t will be nts. ts value is 40. ts value is 40. So final x1n कितना आ गया? Final x1n is nothing but sir cos of, ये 2 0 0 कट गया तो 2 you will get cos of pi/2n. बोलो प्यारे बच्चों yes or no? Cos of pi/2n, is this crystal clear? Is this crystal clear? I hope it is clear. Cos of pi/2n आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब मेरे को बताइए स्टूडेंट x2n क्या हो जाएगा? What is x2n? When you will write x2n, what will be the x2n? तो सर x2n ये था, x2t था cos 100 pi t, तो यहाँ आ जाएगा बेटा cos of 100 pi, t will be क्या हो जाएगा? nts, t will be हो जाएगा nts। ts का वैल्यू कितना है सर? ts का वैल्यू है हमारा 1/40, तो ये 1/40 आ गया। अब बच्चों यहाँ से सोल्व करेंगे तो बताया x2n कितना आ जाएगा? x2n आ जाएगा आपको cos of, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया है सर, 5 2 10 5 2 4 सॉरी 2 2 4 2 5 10, सो 5/2 इंटू पाई n लिख दूं मैं 5/2। सो x2n का वैल्यू आ गया 5/2
इंटू पाई एन, और यहाँ आया cos पाई बाई 2 है। तो आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, देन यू विल गेट x2n जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल ये लिखा हुआ है cos ऑफ 5 इंटू पाई बाई 2n, मतलब 5 जो है वो ऑड वैल्यू है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2n आया है एक्चुअली देखा जाए तो इस, और यहाँ पे भी ये पाई बाई 2n और वंस का मल्टीपल है। अब आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि फॉर द फर्स्ट 10 सैंपल्स विच ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट। फर्स्ट 10 सैंपल्स की अगर बात करोगे 0 1 2 3 आप चाहे वैल्यू पुट कर दो, तो डोंट यू थिंक, केवल आप फील करके देखो कि फर्स्ट 10 सैंपल्स इवन x1n इज इक्वल टू x2n, x1 इक्वल टू x2n क्यों हो गया। अब आप वैल्यू पुट करते हैं, आप थोड़ा सा एक दो वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं मैं। अगर आप वैल्यू पुट करोगे n इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर n इक्वल टू 4, फिर 5, चलो मैं सब लिख देता हूं 6, फिर 7, फिर n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 9 और 10 भी पुट कर देना, चलो ठीक है। अब मेरे को ये वैल्यू बताते जाओ कि सर x1n का वैल्यू कितना है और x2n का वैल्यू कितना है। सारा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी वैल्यू निकालेंगे हम ऑब्जर्व कर लेंगे। बताइए, ये रहा मेरा x1n और ये रहा मेरा x2n। अब मैं केवल n का वैल्यू दोनों में 0 पुट करता हूं तो cos 0 1 होता है, वहां भी cos 0 1 होता है, दोनों का वैल्यू 1 आ गया, मतलब x0 भी 1 आया, x1 0 भी 1 आया, x2 0 भी 1 आया, दोनों का वैल्यू 1 आया। When I will put n equal to 1 here also, तो cos pi by 2, cos pi by 2 क्या होता है, cos 90 0 होता है सर। यहाँ भी ये n का वैल्यू 1 पुट किया, cos odd multiple of pi by 2 is always 0, cos 0 1 होता है, cos 2 pi 1 होता है, cos 4 pi। अगर cos का वैल्यू pi, cos pi minus 1, cos 3 pi minus 1, cos 5 pi minus 1 है ना, तो odd multiple of pi minus 1 आएगा, even multiple of pi plus 1 आएगा, और odd multiple of pi by 2 हमेशा 0 आएगा, ठीक है सर। तो इसका मतलब सर ये n equal to 1 पुट किया, तो n equal to 1 पुट किया यहाँ पे, तो cos 5 pi by 2 बनाया जो कि 0 होता है। तो देखो n equal to 2 पुट कर लो, जब n equal to 2 पुट किया तो cos pi मतलब -1 होता है। यहाँ पे n equal to 2 पुट किया तो cos 5 pi अगेन -1 होगा। तो इन शॉर्ट में क्या बोलना चाहता हूँ कि ये सारा वैल्यू सेम आएगा, ये सारा वैल्यू सेम आएगा, मतलब x1n इक्वल टू x2n फॉर द फर्स्ट 10 सैंपल्स की बात कर रहा था, तो x1n x2n सेम आएगा। तो ये ऑप्शन में क्या बोल रहा था कि ऑल द फर्स्ट 3 सैंपल्स ऑफ x1t, मतलब x1 x2 x3 है ना, वो जो है their corresponding samples are all the first samples are greater than और less than का तो सवाल ही नहीं, सभी इक्वल है, सभी इक्वल है बच्चों। तो इसमें ये ग्रेटर जो जिस भी ऑप्शन में है ABC वो सब 0 हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ ऑप्शन नंबर डी है all the 4 to 7 samples of x1t and the x2t samples are same, या लिखा है इक्वल। इवन 4 to 7 नहीं, सभी, अगर सभी होते तो भी करेक्ट आंसर होता, क्योंकि x1 से फर्स्ट 10 सैंपल्स में x1 और x2n के सभी सैंपल्स, x1t और x2t के ऑल द सैंपल्स आर इक्वल, और ये बोल रहा है कि 4th और 7th इक्वल है, तो ये भी इक्वल होंगे। करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली ओनली। ओके, चल, तो अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, 1 मार्क्स में पूछा गया बिल्कुल, लेकिन आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन का, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करें। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, हमको क्लास में बताया था कि यू हैव टू टेक व्हेनेवर एनी डिफरेंस इक्वेशन इज गिवन, then we have to take Laplace transform. Whenever any differential equation is given, then we have to take Laplace transform to find transfer function, and whenever any difference equation is given, we have to take Z transform both sides, है ना। तो यहाँ Z transform लीजिए both sides. So when you will take Z transform, Y and Z transform is YZ equal to, you will get 5/6 Z inverse YZ, then you will get minus का 1/6 Z की पावर माइनस का 2YZ n plus x of Z, that you will get. Now tell me guys, when you will take common in YZ, you will get what? You will get 1 minus का 5/6 Z inverse and plus 1/6 Z minus 2, or is equal to x of Z. Yes. So what is the final YZ upon XZ? So you will get final YZ upon XZ is nothing but 1 upon 1 minus का 5/6 into Z inverse and plus 1/6 Z minus का 2. ये guys this. Now student tell me Z minus 2 को कॉमन लेके ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ से अगर उसको ऊपर भेजने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर यहीं से मेरे को x of Z भी दिया था, x of n भी दिया था, बताइए x of n का अगर मैं Z ट्रांसफॉर्म लूंगा, then what you will get? You will get sir x of Z equal to, what is the del n Z transform is 1 minus का 1/3 Z inverse. ये सर ये आ गया। Now student, when you will just do the partition of this, है ना, थोड़ा सा इसके अलग अलग हम पार्टीशन कर देते हैं, तो यहाँ मिलेगा आपको 1 minus का half Z inverse and 1 minus का 1/3 Z inverse. Should we write like this? Yes sir. और देखो मल्टीप्लाई करो 1 को 1 से, फिर
1 by माइनस हाफ और माइनस ये मिलकर बनाएगा -1/6 और माइनस माइनस प्लस 3 to 6 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे x ऑफ z को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई विल मल्टीप्लाई x ऑफ z, अगर x ऑफ z को न्यूमरेटर में लेके आओगे तो ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कैंसिल कर देगा, पता है आपको? तो पता है yz क्या बच जाएगा? yz बचेगा आपका केवल 1/1 माइनस का हाफ z इनवर्स, ये बचेगा। यस। अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, है ना? तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, अभी देख लेते हैं। तो आप बताइए सबसे पहले, अगर मैं इसको कॉजल बनाऊं, देखो यहाँ लिखा है ऑप्शन, कॉजल तो स्टेबल, नॉन कॉजल तो स्टेबल, ये सब ऑप्शन में लिखे हैं। तो अगर स्टूडेंट इफ आई विल मेक इट कॉजल, कॉजल मींस ROC मस्ट बी राइट साइड टू द राइट मोस्ट पोल इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इन द Z ट्रांसफॉर्म ROC मस्ट बी आउटसाइड टू द आउटर मोस्ट सर्कल। तो यहाँ पे जो भी सर्कल है कॉजल के लिए एक पोल है हाफ, तो ROC होना चाहिए राइट साइड। इसका मतलब UN का बनाएगा, मतलब ये आएगा AN UN, मतलब हाफ की पावर N UN। अब देखो हाफ की पावर N UN है, मतलब ये कि अगर आप इसका ROC डायग्राम बनाओगे, केवल ROC डायग्राम रफली बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पे हाफ पे एक सर्कल बनेगा एंड सपोज करो कि यहाँ एक यूनिटी सर्कल है। इफ इट इज कॉजल देन ROC इज गोइंग आउटसाइड, इफ इट इज कॉजल देन डेफिनेटली ROC इज गोइंग आउटसाइड। और अगर कॉजल है तो ROC आउटसाइड जा रहा है, सो व्हेन ROC इज गोइंग आउटसाइड टू द रेडियस ऑफ हाफ सर्कल, this radius is half, then of course the ROC include unity circle, and we know that कि whenever ROC include unity circle it will make the system stable only। तो ये बोल रहा है कि क्या होगा इस पूरे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब ये कॉजल है ना, जब ये कॉजल है तो ये स्टेबल भी है। when it is causal it is stable only when it is causal। ये केवल कॉजल, ये केवल स्टेबल कब बनेगा? जब ये कॉजल बनेगा। इज इट क्लियर? और ये केवल जब कॉजल बनेगा तो स्टेबल ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो स्टेबल एंड कॉजल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 शायद हो गया, 13, 15, 16 हो गया, ठीक है सर, ये शायद 16 ही था ना, ये 16 क्वेश्चन ही था, 16 हो गया। चलिए आइए बात करेंगे 37 क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अच्छा एक मिनट रुकिए, ये कौन सा क्वेश्चन निकल गया? और क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया ऑलरेडी, 1/s+4 आंसर आ गया। कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके ना, कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया, हम सिग्नल सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का वेट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 37, उसके बाद जो भी सिग्नल क्वेश्चन आते जाएंगे हम करते जाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने क्वेश्चन का सीक्वेंस लिख लिया है, ताकि हमको एक एक क्वेश्चन को ना रीड करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं हम। हम 37 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 43। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 37, ओके गाइस, तो ये 39 आ गया, 37। सो क्वेश्चन नंबर 37, ओके, अगेन ए गिफ्टेड क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो। व्हाई वेरी इजी सर? देखो क्वेश्चन नंबर 37 है, आइए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि सर ए कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल इज ए पीरियोडिक, ओके, नाउ फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है, और ये जो कंडीशन है इट इज नथिंग बट द हाफ वेव सिमेट्रिकल कंडीशन। वी नो दैट HTS इक्वल टू माइनस का x ऑफ t प्लस माइनस का t/2। अब एग्जामिनर ने ले रखा है यहाँ माइनस साइन, ओके ले सकता है, तो एग्जामिनर हम इसको लिख सकते हैं सर xt इक्वल टू, ये होता है कंडीशन माइनस का x ऑफ t माइनस का t/2, and this is the condition of half wave symmetric signal, half wave symmetric odd, half wave symmetric condition. And whenever the signal satisfied this condition, it means HWS signal and half wave symmetrical signal having what? Which property? Average value always equal to 0. Average value मतलब A0 value always 0. And the Fourier series will contain only odd harmonics. Fourier series will contain only odd harmonics. It means all the even harmonics will become 0. It means for the HWS-O signal, all the even harmonics will be 0. All the even harmonics will be 0. मतलब जितने भी इवन कोफिशिएंट है वो सारे 0 हो जाएंगे सर। अब बताओ अगर सारे कोफिशिएंट 0 हैं तो करेक्ट आंसर होगा A2M। 2M का मतलब इवन हो गया, इवन कोफिशिएंट सारे जो भी हैं वो 0 हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर A फॉर अहमदाबाद ओनली।
करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता था, ये तो गिफ्ट था और ये 2 मार्क्स में पूछा गया, ये सरप्राइज है मेरे लिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया, ये आपके लिए सरप्राइज है, इतना आसान सा क्वेश्चन। चलिए आइए बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ठीक है 40, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 43 फिर 46। ओके 43 की बात कर लेते हैं। लेट्स सी 43 क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों सिग्नल सेंस सिस्टम से काफी क्वेश्चंस हैं। अगर मैं काउंट करूं सिग्नल के क्वेश्चन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस आपको सिग्नल सेंस सिस्टम से मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिए अगेन ये 2 मार्क्स में पूछा गया, मतलब ये तो वापस गिफ्ट आ गया आपके लिए यार, ये तो गिफ्ट है वास्तव में आपके लिए। कैसे सर, कैसे गिफ्ट, कैसे बताऊं? देखो एनर्जी कैलकुलेशन क्लास में अगर मेरी क्लास में पढ़े हो तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा था। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन का। तो बोल रहा है कि सिग्नल एक्स टी जो है वो लिमिट माइनस टी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। ओके, और बोल रहा है कि सिग्नल एक्स टी इज इक्वल टू 0 व्हेन टी इज लेस देन 0। ओके सर, और ये एक्स टी इक्वल टू 2 कब है? 0 से लेके 1 और बाकी भी 0 है, बाद में भी 0 है। ओके, तो मतलब ये है कि अगर मैं एक्स टी को ड्रॉ करूं, यू विल ड्रॉ द सिग्नल एक्स टी, अगर आप सिग्नल एक्स टी को ड्रॉ करोगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर पल्स मिलना चाहिए 0 से 1। 0 से 1 में एक रेक्टेंगुलर पल्स मिलेगा विच इज हैविंग द मैग्नीट्यूड 2। ओके सर, so this is your xt signal sir, yes, and we have to find out the energy of this signal. The formula minus infinity to infinity mod of xt whole square, this is nothing but the energy of signal xt, energy of signal x of t. And we all know the short trick, the energy for the rectangular pulse will be always a square into b. So the magnitude is 2 and the amplitude is a, so that directly short trick बोलता है a square into b, b means this width, a means this amplitude. The final energy is nothing but 2 square into 1, मतलब 4 हो गया। So it means the energy of signal xt is what guys? 4. Energy of signal xt is 4. Examiner is asking for this ना, so capital of e, capital of e xt, capital of e xt का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 4, capital of e xt का वैल्यू आ गया 4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1, so this is I just keep in the equation number 1. Now second thing, we all know that the energy calculation is depending on, suppose that if you remember this box energy calculation, so if xt energy is capital E, suppose that xt energy is capital E, then minus ka kx of minus ka at plus b, energy is nothing but whatever the amplitude should be square, because in the energy formula mod ka whole square, and here also we are having a upon mod, here mod of a, mod of a. So when you will do this k square, so directly we can write down the energy of what? Energy of 3 into x of minus 3t plus 5. Energy calculation is independent to the time shifting. So यहाँ depend करेगा 3 का whole square कितना हो जाएगा 9, 3 whole square is 9, and whatever the ext energy कितना था 4 था सर, upon mod of 3, upon mod of minus 3 means like this. So final answer will be what? So you will reply 3 3 ja 9 sir, 4 3 ja 12 sir. So now you have to divide with this. You have to divide ex of t. You have to divide what? Ex of t upon e of 3 into x of minus 3t plus 5. So ex of t का वैल्यू 4 था और इसका वैल्यू 12 आ गया. So don't you think 4 3 ja 12? Final answer will be 1/3. And 1/3 exactly present in the option number Chennai Super King. Final answer for the question number 43 is option C. Final answer for the question number 43 is option number C. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 43 भी हमने कर लिया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिग्नल्स एंड सिस्टम क्वेश्चन व्हिच इज इन 46. ओके, so coming to the question number 46. Question number 46. चलिए 46 इट डिजर्व एक्चुअली 2 मार्क्स बिकॉज थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट होगा इसमें, तो बेटर है हम इसको ब्लैंक स्लाइड पे करेंगे। सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द ब्लैंक स्लाइड।
ओके, एक बार क्वेश्चन को साथ देख लेते हैं, एक बार थोड़ा क्वेश्चन को वापस से देख लेते हैं। चलिए, सो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द क्वेश्चन सर? हाँ, क्वेश्चन डेटा इज हियर, वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट डिजर्व 2 मार्क्स, आई एम टेलिंग यू, डिजर्व द 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो द एक रियल, कंसिडर a real baseband signal xt equal to e to the power minus 2t ut, okay, है ना? We can solve this question in a signal system question easily. If the 99% energy of xt lie within a capital B hertz, okay, then which of the following option is true for the value of B? Okay sir. So now student, first of all you can tell me what is the energy of x2. अगर मैं इस क्वेश्चन का डेटा थोड़ा ब्लैंक स्लाइड पे लेना चाहूंगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंदी क्वेश्चन होगा ये, सो गो टू द ब्लैंक स्लाइड, बेटर है कि हम ब्लैंक स्लाइड पे चले। तो ब्लैंक स्लाइड पे मैं थोड़ा सा आइए बात कर लेते हैं, सिग्नल सिस्टम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, गेट 26 और बाद ब्रांच है बच्चों EC। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या था। सो क्वेश्चन हमारा ये, क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों? हाँ, xt का दे रखा है e की पावर माइनस 2t, e की पावर माइनस 2t दे रखा है, ओके, e की पावर माइनस 2t। I should write here x of t equal to given to us e to the power minus 2t ut. An examiner is asking for the energy, 99% of energy is 99% of this energy is lie within b hertz, मतलब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ओके सर, तो हमको पार्सवेल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ओके, we'll use the पार्सवेल थ्योरम here. Come on. So now student tell me how to solve. So for सबसे पहले you can tell me what is the energy of this signal. The energy we all know that energy of e to the power minus 80 ut directly shorting होता है। e to the power minus 80 ut directly energy is 1/2 always 1/2। So e to the power minus 2t ut energy कितना आ जाएगा? एनर्जी हो जाएगा 1/4। e to the power minus 2t ut energy will be 1/4 sure, 1/4 for sure, yes, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एग्जामिनर बोल रहा है 99% ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द बी हर्ट्ज। ओके सर, तो पहले बताइए कि एनर्जी का फॉर्मूला पार्सवेल थ्योरम में क्या होता है? पार्सवेल थ्योरम से अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनर्जी को बोलोगे माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, यहाँ बोलोगे आप मोड ऑफ एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर डी ओमेगा, ये बोलोगे। नाउ स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम उसको फ्रीक्वेंसी को मैं मान लेता हूँ FC, मैं मान लेता हूँ फ्रीक्वेंसी मेरा F है ना, FC है, तो रेंज हो गया माइनस FC से लेके FC। तो अगर हम बोले, अगर उसको जो ये बोल रहा है एग्जामिनर, यहाँ ये बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ दिस लाई विद इन बी हर्ट्ज, ओके, बी हर्ट्ज के लिए बोल रहा है, तो जो लिमिट लगेगा, जो लिमिट अपना लग जाएगा, उसको चाहे तो बी ले लो चाहे एफ ले रहा हूं मैं, है ना, आपकी जो मर्जी, क्योंकि बी जो है वो हर्ट्ज है, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है ना, तो मैं यहाँ एफ लिख रहा हूँ, तो लास्ट में हम वापस बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एनर्जी कितना है? एनर्जी है सर 1/2 पाई, और इसमें स्टोर है, इसमें स्टोर है मतलब ये माइनस बी से लेके प्लस बी का लिमिट लगा सकते हो आप, मैं माइनस एफ से लेके प्लस एफ का लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है, माइनस एफ से। आप चाहो तो एफ को बी भी लिख सकते हो, एफ सी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो ना। क्या अब मैंने ये लिमिट लगा दिया और यहाँ पे एक्स ओमेगा, अब मेरे को बताओ एक्सटी अगर दे रखा है, एक्सटी अगर मेरे को दिया है विच इज व्हाट e to the power minus 2t ut, can you please take the Fourier transform of this? Yes sir, Fourier transform is 1/2 plus j omega। अब आप सोचो कि ये अगर xt है तो ये x ओमेगा है, yes sir, and we want magnitude of this, so what is the mode of x omega? So you will reply 1/√2 का whole square 4 plus omega square, ये तो है। And when you will make it whole square, so you will write here 1/4 plus omega square। अब मैंने whole square कर दिया तो रूट हट गया, when you will do the whole square, root will become neglect guys, है ना, root will definitely disappear। So now here when you will integrate, what you will get? अच्छा, what is the energy of 99% of this energy? What is the energy of xt? Energy of xt is 1/4। So 1/4 का 99%, 99 means 0.99 into 1/4, 99% of this energy stored in this, so we are looking for f, okay, fc बोल दो या b बोल दो, whatever you like। Now student, when you will integrate this, integration of this, don't you think it will be a upon a square plus omega square? So a नहीं है तो हम लिखेंगे 1/a, so after performing integration you should write 1, a value is 2, so 1/2 tan inverse, 1/2 tan inverse omega by 2, yes, omega, and here the limit goes to, here the limit goes to minus f2 up, minus f2 plus f, yes। So now students simplify it little bit, so when you will simplify, finally you will get here same to same 0.99 multiple of 1/4 equal to 1 upon, ये 2 जा, आप चाहे तो उसको 1/4 पाई कर लीजिए, 1/4 पाई, एंड हियर यू विल अप्लाई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो व्हेन यू विल अप्लाई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, चाहे तो आप बी कर लो चाहे एफसी कर लो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और क्योंकि ये ओमेगा में रखा था तो मैं को शायद क्योंकि ये ओमेगा में लिखा है तो हमको यहाँ ओमेगा सी करना चाहिए था एक्चुअली, तो क्योंकि लिमिट ओमेगा में लिखा है ना, तो ये हमको ओमेगा में करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम उसको बी हर्ट्ज मतलब एफ में कन्वर्ट करेंगे, बाद में हम उसको एफ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ये रहने देते हैं, यहाँ लगा देता हूँ मैं लिमिट माइनस ओमेगा सी से लेके प्लस ओमेगा सी, ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा में है तो यहाँ लिमिट लगा दोगे आप, क्या लिमिट लग जाएगा सर माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी को डायरेक्ट बाद में मैं एफ सी लिखूंगा और एफ सी को मैं बी लिखूंगा, ठीक है। आपको पता है ओमेगा सी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा सी इक्वल टू 2 पाई एफ सी होता है, और एग्जामिनर बोल रहा है एफ सी को बी हर्ट्ज बोल, बी मतलब बी हर्ट्ज में लिखा है एग्जामिनर, ठीक है। तो ये चीज हम लास्ट में बात करेंगे, अभी हम ओमेगा में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओमेगा सो स्टूडेंट 1/2 को बाहर ले लिया मैंने, आप लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स ओमेगा सी बाई 2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ओमेगा सी अपॉन 2। यहां तक की बात क्लियर है क्या? यस। अगर यहां तक की बात क्लियर तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा, बताना गिवन डेटा क्या क्या है। तो लेफ्ट साइड में था सर 0.99 मल्टीपल विथ 1/4 इज इक्वल टू ये था। अब देखो ये 2/4 पाई था, कैंसिल होगा, एक बार लिखता हूं मैं फिर कैंसिल करेंगे। 2/4 पाई tan इनवर्स ओमेगा सी बाई 2, tan इनवर्स ओमेगा सी बाई 2 ये था। नाउ टेल मी गाइस कि कौन सा पार्ट कैंसिल हो रहा था, बताओ आप लोग। सर ये तो 4 तो वैसे कैंसिल हो गया सर। और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया सर 0.99 मल्टीपल ऑफ ये आ गया पाई, ये पाई इधर ले लो, 2 इधर ले लो, पाई बाई 2, ओके सर, ये तो आया, ये आया सर। और इज इक्वल टू क्या आ गया, और सर इक्वल टू आ गया आपका tan इनवर्स ओमेगा सी अपॉन 2, tan इनवर्स ओमेगा सी अपॉन 2 आ गया सर, बिल्कुल परफेक्टली आ गया सर। सो कैन आई टेक tan बोथ साइड? यस सर, यू कैन टेक। तो बच्चों को जरा बताओ कि व्हेन आई विल टेक tan बोथ साइड्स व्हाट आई विल गेट tan इनटू 0.99 इंटू पाई बाई 2, ठीक बात है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा सर ये ओमेगा सी बाई 2। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो तो एक बार देखो, यहां तक की बात तो क्लियर होगा, रिकॉर्डिंग में वीडियो है, अगर लाइव होता तो आप मेरे को डेफिनेटली रिप्लाई भी कर देते। तो यहां तक हमारे का आया tan पाई बाई 2 0.99 इक्वल टू आ गया है ओमेगा सी बाई 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, अब जब आप इसका वैल्यू निकालोगे ना, तो यहां से पता है क्या आएगा, यहां से आएगा ओमेगा सी बाई 2 इक्वल टू ये जो tan 0.99 पाई बाई 2 कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा आपका, वो आएगा आपका 63.99, और ये डिग्री में नहीं निकालना है, रेडियन में निकालना है। 63.66 के आसपास आ रहा है, 63.66 के आसपास। और आपको पता है एग्जामिनर ने क्या लिखा था, एग्जामिनर ने एफसी को बी लिखा था और आपको बी का बैंड पूछा था, बी का बैंड, ओके। तो हमको पता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफसी होता है सर, बिल्कुल होता है। तो एफसी की रेंज क्या हो गई यहाँ से 2 पाई एफसी बताओ जरा, है ना। तो ओमेगा सी इक्वल टू ये आया है ना, ओमेगा सी इक्वल टू ये आया, बिल्कुल आया सर। तो अगर मैं ओमेगा सी की जगह 2 पाई एफसी अपॉन 2 इक्वल टू लिखता हूं, अगर 63.66 के समथिंग, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मेरे को बताओ कि यहां से एफसी का वैल्यू क्या हो गया। तो यहाँ बोलोगे 2 कट जाएगा सर, 2 कट जाएगा, तो एफसी का रेंज जो आएगा, और जो एफसी था वो बी था, तो एफसी का रेंज आया 63.66 अपॉन पाई। मतलब अगर मैं एफसी को मैं बी बोल रहा हूं, तो बी का जो बैंड आया ना, वो आ जाएगा 63.66 अपॉन पाई, मतलब 63 पॉइंट समथिंग अपॉन पाई आया आंसर, 63 पॉइंट समथिंग अपॉन पाई, 63 पॉइंट समथिंग अपॉन पाई। अब देखो ये किस ऑप्शन में दे रखा था, अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। 63 पॉइंट समथिंग अपॉन पाई आया था, तो देखो बैंड, तो बैंड का आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि वो बैंड पूछ रहा था, तो बैंड का आंसर क्या हो जाएगा 63 अपॉन पाई हर्ट्ज से लेके 64 अपॉन पाई हर्ट्ज। इट मींस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओनली, करेक्ट आंसर विल बी बी ओनली। इज दिस क्लियर? तो जो रेंज मिल रहा है आपको, वो जो बी मिल रहा है, एफ जो रेंज मिल रहा है, वो आपको ये रेंज मिल रहा है। इज दिस क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? चलो, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 46 था शायद, 46। अभी बात कर लेते हैं 47 का इमीडिएटली, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, 47 की बात कर लीजिए सर। 47 आइए 47। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। डिस्क्रीट टाइम के अंदर पूछा है, जनरली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कंटिन्यूअस टाइम पूछे जाते हैं, बट डिस्क्रीट टाइम में भी पूछा जा सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन था, और इसका डायरेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा। शायद ये क्वेश्चन 2 नंबर डिजर्व नहीं करता, क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं है, केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ओनली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आई मस्ट से ओनली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्यों है सर? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे क्या दिखा है, ये लिखा है इसने, consider the discrete time system with the input x and y and shown in the figure. The two subsystems represented h1 and h2n are linear and time invariant. ये एग्जामिनर बोल रहा है कि ये जो h1n and h2n है, both are linear and time invariant, मतलब ये LTI सिस्टम है,
मतलब ये LTI सिस्टम है, ओके सर। नाउ स्टूडेंट, which of the following statement is true about the system S? S is causal, S is linear, time invariant, what? Now tell me guys, this overall system, how many components we are having? We are having Z inverse मतलब delay. We are having Z inverse means delay. Delay means in the time domain you are saying time shifting. Time shifting मतलब x of, आप बोल सकते हो टाइम शिफ्टिंग मतलब x ऑफ n माइनस एन नॉट, और अगर h में बोलोगे तो h ऑफ n माइनस वन, अगर z माइनस वन है। स्टूडेंट, टाइम शिफ्टिंग और डिले ऑपरेशन डजंट अफेक्ट लीनियरिटी एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। मतलब ये कि टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, टाइम शिफ्टिंग मतलब डिले ऑपरेशन डजंट अफेक्ट लीनियरिटी को भी अफेक्ट नहीं करता और टाइम इनवेरिएंट को भी अफेक्ट नहीं करता है। ओके सर, ये तो बात समझ में आ गई। दूसरा चीज है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहला तो हमने यूज किया डिले, और दूसरा लग रहा है समिंग पॉइंट और डिफरेंसिंग पॉइंट। तो सम और डिफरेंसिंग प्लस माइनस, अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट आल्सो डजंट अफेक्ट लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। इसका मतलब H1 H2n पहले से LTI थे और Z इनवर्स और समेशन प्लस माइनस साइन डजंट अफेक्ट। तो इसका मतलब ओवरऑल सिस्टम इज आल्सो LTI ओनली, एंड एक ही ऑप्शन था लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंगलोर। 47 में क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर का गिफ्टेड क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन था ना, बड़ा कैलकुलेट करना था, सब कुछ करना था, तो गलती होने का चांस था। ये क्वेश्चन गिफ्टेड था, यहाँ गलती होने का चांस कम था। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 भी हमने कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं 46 और कुछ 47 के बाद अब आएगा 58, है ना। 47 भी हमने कर लिया है। 58 क्वेश्चन कर लेते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है सिग्नल सेंस सिस्टम का, क्वेश्चन नंबर 58। बस रुक जाते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए बच्चों, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो थोड़ा सा हम बोलेंगे, थोड़ा इस क्वेश्चन में आपको ऑर्थोगोनल वाला कॉन्सेप्ट अगर पता था तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते। तो ये MSQ था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, MSQ क्वेश्चन है। हम यहीं पे थोड़ा ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, थोड़ा सा स्पेस बना के। आप बस ध्यान दीजिएगा यहाँ, ऑल ऑफ यू जस्ट फोकस। हाँ चलो, क्वेश्चन विजिबल है क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेट x1t ओके 2πnt। अब कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे इस n से, आपको n से कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस ऑफ ω0t मतलब 2πn जो है ना, वो ω0 जो है फ्रीक्वेंसी है। और अगर आपको पता है कि सर ये ω1 है, ये ω2 है, क्योंकि t का मल्टीपल है ना, तो 2 cos ω1t और 2 sin ω2t। ठीक है। अब आप अगर ω1 बोलोगे, अगर ω1 आपको 2πn दे रखा है, तो पता है ओमेगा होता क्या, ओमेगा होता है 2πf। तो कंपेयर करोगे तो f को n लिखा है, बस ये कंफ्यूजन था। f को n लिखा, कंफ्यूजन नहीं होना आपको। n को कुछ लोग डिस्क्रीट समझेंगे, है ना, तो आपको समझना है कि यहाँ f जो है ना वो n है, और जो n है ना वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है साहब कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर, n जो है वो इंटीजर, मतलब जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है f जो n। अब देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट x1t एंड x2t आर वैलिड। ओके so x12 and x2t are orthogonal to each other for this interval 0 से लेके 1/n लिमिट लगा रखी है। ओके सर, n जो है इंटीजर है। ओके, पहली बात आप ये ऑब्जर्व करो कि x1t और x2t ये अपने आप में जब ऑर्थोगोनल होते हैं तो ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टी होता है बेटा ये इंटीग्रेशन सिग्नल x1t डॉट x2t अगर इक्वल टू 0 है देन ओनली इट इज सेइंग दैट ऑर्थोगोनल। तो बिकॉज ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हमको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो व्हेन यू विल चेक द ऑप्शन नंबर ए, सो व्हेन यू विल चेक द ऑप्शन नंबर ए यू विल गेट x1t x2t आर ऑर्थोगोनल फॉर द लिमिट फ्रॉम 0 to 1/n। ओके 0 to 1/n। अब बताइए x1t क्या है। सो व्हेन यू विल रिप्लाई x1t जस्ट पुट दिस वैल्यू। सो आई एम जस्ट डूइंग दिस 0 to 1/n। x1t वैल्यू आई एम पुटिंग cos of what 2π, टेल मी cos of 2πnt dot 2 I am writing outside। okay 2 sin है ना, sin I am writing here 2 sin of 4πnt into dt। अब प्यारे बच्चों आपको एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है 2 sin a cos b। 2 sin a cos b क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि a का वैल्यू बड़ा है 4πnt 2πnt से बड़ा है। तो 2 sin a cos b क्या होता है, 2 sin a cos b सॉरी 2 sin a cos b क्या होता है, अगर यहां लिख दूं मैं आपके लिए फॉर्मूला केवल 2 sin a cos b is nothing but बेटा sin of a plus b plus sin a minus b, sin of a plus b plus sin a minus b होता है प्यारे बच्चों, sin a plus b sin a minus। ओके सर, और 2 को भी इंक्लूड कर लिया है, 2 को इंक्लूड कर लिया है। तो 0 से लेके 1/n
व्हेन यू विल राइट sin a plus b मतलब ये हो जाएगा sin 4 pi n एंड 2 pi n मिलके बन जाएगा sin of 6 pi nt, sin 6 pi nt प्लस sin 6 pi nt dt प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से लेके 1 by n एंड इट विल बी sin of 2 pi nt into dt. नाउ डियर स्टूडेंट, यू शुड जस्ट टेल मी सर ये 6 pi n है, ये 2 pi nt, आप इंटीग्रेट कर लो, इसको कर लो इंटीग्रेशन. जब आप इंटीग्रेशन भी करोगे ना तो साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोस 6 pi nt अपॉन 6 pi n, और जब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे ना प्यारे बच्चों तो ये n से n कट जाएगा, और cos 6 pi cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है मतलब 1 आएगा, और cos 0 भी 1 आएगा. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 माइनस 1 से 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 0 ये भी 0, इंडिविजुअली दोनों 0 हो जाएंगे. और अगर दोनों 0 हो गए तो इसका मतलब ये कि ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज डेफिनेटली करेक्ट. x1t and x2t are orthogonal to each other. Yes, definitely correct for sure. अब जो डायरेक्ट सही दिख रहा है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना. देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में पहले आपको ये देखना है कि विच इज 100% करेक्ट. अब देखो ये क्या है, x2t इज ए हार्मोनिक ऑफ x1t. सर मेरे को बताओ x1t का फ्रीक्वेंसी कितना है. हम लोग सर x1t का जो फ्रीक्वेंसी आया है, जो फ्रीक्वेंसी अगर मैं ओमेगा में बात करूं तो ओमेगा 1 कितना है, 2 pi n है, 2 pi n ओमेगा 1 है. तो ये ओमेगा 1 जो है ना, ये ओमेगा 1 है. या अगर आप इसका ये ओमेगा 1 है तो इसका f1 क्या हो गया, बोलोगे सर f1 जो है वो n है, तो इसका सेकंड हार्मोनिक क्या होगा, f2 बोलोगे 2n होगा. और यहाँ पे क्या है देखो, जब आप 2 pi का डिवाइड करोगे यहाँ तो क्या बचेगा, बचेगा 2 बचेगा, 2n ही तो है. तो इसका मतलब ये कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है तो सेकंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी 2n ही तो होगा. तो x2t इज ए हार्मोनिक ऑफ x1t, डेफिनेटली करेक्ट है. और अगर ये भी पूछ लेता है कि कौन सा हार्मोनिक, तो सेकंड हार्मोनिक है. तो x2t x1t का हार्मोनिक है, करेक्ट है, तो a भी करेक्ट है, c भी करेक्ट है. a and c एब्सोल्युटली करेक्ट प्यारे बच्चों. अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि x1t x2t आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर फॉर दिस लिमिट. अच्छा इस लिमिट के लिए हमने चेक किया, ऑर्थोगोनल है, बिल्कुल है, ऑप्शन एक करेक्ट है. अब ये बोल रहा है कि x1t एंड x2t आर नॉन ऑर्थोगोनल टू ईच अदर फॉर दिस लिमिट. अच्छा तो एक काम करते हैं कि सर ये पूरा सारा काम करके देख लेते हैं, केवल लिमिट चेंज करेंगे 0 से लेके 1 by n की जगह 1 by 2n करके देख लेते हैं क्या होता है, देख लेते हैं. थोड़ा सा आप अगर स्मार्ट अप्रोच है तो मैं वापस नहीं करूंगा, केवल मेरे को बताओ बेटा कि ये सब लिखने के बाद जब आपने इंटीग्रेट किया था ना यहाँ, तो पता क्या आया था, साइन का इंटीग्रेशन आया था माइनस का कोस 6 pi n अपॉन 6 pi n है ना. और लिमिट पिछली बार लगाया था 0 से 1 by n, लास्ट टाइम लिमिट लगाया था 0 से 1 by n से n कट गया था, तो ये बचा था बेटा 6 pi, और cos 6 pi होता है +1 है ना, तो +1 और फिर cos 0, तो cos 0 भी 1 ही होता है, तो 1 - 1 0 हो गया था. इस बार पता है क्या होगा, जब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 से लेके 1/2n है. इस बार लगाओ अपर लिमिट लोअर, माइनस तो बाहर ले लिया है ना, आप लगाओ अपर लिमिट लोअर लिमिट फटाफट से. So when you will apply the upper limit and lower limit, cos of 6 pi nt है ना, अब t की जगह लिमिट लगाओ, आप t की जगह लिमिट लगाओ 1/2n, जब लगाओगे 1/2n तो n कट जाएगा और ये बचेगा 3 pi, cos of 3 pi बचेगा, माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया. cos 3 pi माइनस का cos 0, पता है cos 3 pi क्या होता है, cos 3 pi होता है -1, cos odd multiple of pi always -1 and cos 0 also 1, और बीच माइनस साइन तो माइनस माइनस कटेगा नहीं, इट विल नॉट कैंसिल दिस टाइम. ये -1 और -1 मिलके -2 बन जाएंगे, +2 मतलब ये 0 नहीं आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x1 x2 dt इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा इस केस में. इस केस में 0 से लेके 1/2n x1t, ये बोलो x1t डॉट x2t dt is not equal to 0, hence non orthogonal. Not equal to 0 means non orthogonal for this limit, and exactly लिखा है non orthogonal, मतलब D ऑप्शन भी करेक्ट है. इसका मतलब सर ये MCQ क्वेश्चन था, A C D तो पक्का करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर. अब ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं. x1t and x2t are orthogonal to each other over the interval of 0 to 1 by n. अब आप ऑप्शन नंबर ए को देखो. So when you will observe option number A, you will see x1t x2t are orthogonal to each other for this limit 0 to n, yes, 0 to 1 by n, yes, that we already proved. It means the first sentence is 100% correct. Ortho normal है ना, ये ortho normal. Examiner is asking for ortho normal. Do you know what is ortho normal? Ortho normal means प्यारे बच्चों, 2 x1t and x2t are said to be orthonormal if they will satisfy these two properties. First is what? First, both should be orthogonal. First, x1t and x2t should be orthogonal. x1t and x2t should be orthogonal. है ना, तो ये पहली बात तो क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा मैं फटाफट लिख दिया हूं, ऑर्थोगोनल होना चाहिए. और सेकंड होना चाहिए, इट शुड हैव यूनिटी एनर्जी. इट शुड हैव यूनिट एनर्जी, मतलब यूनिटी मतलब एनर्जी 1 होना चाहिए.
एनर्जी 1 होना चाहिए फॉर दिस इंटरवल ऑफ 0 टू, जो भी इंटरवल दिया है 0 से लेके 1/n। तो 0 से लेके 1/n में जो उसका एनर्जी है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी जो है 0 से लेके 1/n लिमिट के अंदर, 0 से लेके 1/n लिमिट के अंदर, क्योंकि n आपका फ्रीक्वेंसी था तो 1/n आपको सब कुछ टाइम हो गया, तो 0 से लेके 1/n पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपका जो एनर्जी है वो यूनिटी होना चाहिए। ओके सर, अब मेरे को बताओ कि सर ये x1t, ये जो x1t और x2t है, इनका एनर्जी कितना है? इनका एनर्जी अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड पता है इसका एनर्जी क्या हो, बताओ जरा सर। इसका ओवरऑल आपको पता है सिग्नल जो होता है वो पावर होता है, तो पावर होता है आपका ये a²/2, बोले सुनो है ना। तो पावर कैसे निकालोगे सर? यहाँ पे लिमिट लग रहा है, पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, तो डिवाइड करेंगे तो a²/2 अपॉन n, मतलब ये a का वैल्यू 1 है तो ये 1/2n आएगा, लगभग 1/2n, 1/2n आएगा विच इज नॉट इक्वल टू यूनिटी, 1/2n आएगा विच इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट ए ऑर्थोनॉर्मल, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? यूनिटी और ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल तो है, ये ऑर्थोगोनल तो है ऑप्शन नंबर ए से, बट ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए था, ऑर्थोगोनल तो था बट ये एनर्जी यूनिटी नहीं था। Because of energy is not unity, it is not orthonormal. So correct answer for this question ACD. Correct answer इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्यारे बच्चों ACD। Okay, चल आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 58 भी हमने कर लिया है। ओके गाइस, so that's all। हमने कंट्रोल सिस्टम भी कर लिया, सिग्नल्स भी कर लिया। फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी स्टूडेंट्स के लिए सिग्नल सिस्टम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल बोलूंगा मैं, बिकॉज ऑफ 2 क्वेश्चंस। अदरवाइज कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इजी एंड सिग्नल्स इज आल्सो फॉर टोटल 8 क्वेश्चंस आए सिग्नल सिस्टम में से, 8 में से 6 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, 2 क्वेश्चंस आर मॉडरेट टू टफ आप बोल सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा था और एमएसक्यू की वजह से। ओके गाइस, सो थैंक यू, दैट्स ऑल। Hey everyone, so let's solve the questions from network analysis in the EC question paper. So EC question paper का network analysis question solve करेगा अभी। So 5 question है total. We have 5 questions from network analysis. This is the first question, and I think remaining 4 questions are doable and very easy questions. But this is the question where you need to apply some common sense और थोड़ा सा tricky question है। So ध्यान से सुनो, I'll tell you, and इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है, जैसा इसमें चैलेंज भी कर सकते। I'm not 100% sure they will accept, because इसमें थोड़ा सा गलत भी है। So मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका सॉल्यूशन। So the relation between current I and V of the circuit is given by the equation or governed by the equation। क्या दिया एग्जामिनर? C dV by dt equal to I of t minus M of t। The circuit is excited by the current I of t equal to Q del of t, where Q is some real value to constant. So what is V at a time t equal to 0 minus is V naught. Which of the following is an equivalent representation of the above case? So let me substitute here C dV by dt, and also I will substitute my I of t. So what is my I of t? Q into del of t, which is impulse, minus M of t. Now I just want to find V naught at 0 plus. For that what I will do is I will integrate this equation both the sides. दोनों तरफ integrate करेगा 0 minus से 0 plus. If you have studied integration of 0 minus to 0 plus is infinite small, that is very small value. If you integrate during this period, what you get will be equal to, almost equal to 0 for any finite signal. So here dt cancels, then what you get is C into integration of dv is V of 0 plus, substitute t equal to V equal to 0 plus and minus V of 0 minus. This will give you integration of impulse 1 Q minus. What is the integration of any signal from 0 minus to 0 plus? For all practically existing signals, this will be equal to 0. So examiner has already given you that. 1 minute. So you take this C other side, V of 0 plus minus V of 0 minus. But what is V of 0 minus is given by examiner, minus V naught equal to Q by C. And finally, what is V of 0 plus? V of 0 plus equal to Q by C plus V naught, or V naught plus Q by C.
You take this V naught to the other side, V naught plus Q by C. Just a minute. Here, you got the V naught perfectly correct. You can see here, the next part is in the equation C dV by dt plus I of t minus M of t. I can also write C dV by dt Q into del of t minus M of t. So if you substitute here for t greater than 0, impulse will become 0. The equation of the system will be in this format, dV by dt equal to minus M of t for t greater than equal to 0. He has not specified more explicitly, right? And what is V of 0 plus? V naught plus Q by C. So you can represent the system with this equation. Okay. So here, small tricky part is actually he should specify V of 0 plus as V naught by QC, but he has specified as V of 0 minus. But in one way he can support because हमने challenge किया तो क्या हो सकते हैं? He may be accepting that yes, it should be V of 0 plus V at t equal to 0 plus is V naught by Q of C. Okay. Now, E may be, you can also take like this. This is the initial value from now and इसके बाद this is my system. ऐसा भी ले सकते हैं ना? So, 0 को भी shift किया तो इस case में you can write C dV by dt equal to minus M of t is the equation correct and V at t equal to 0 minus equal to V naught by Q by C. But still I can say one t we have taken the same t should be followed throughout the problem. So according to t equal to 0 minus if you take ये वाला reference लेके किया तो ये compulsory 0 plus ही होना पड़ेगा. So according to examiner how he has taken is impulse is applied at 0. After 0 my system will be represented by this equation and by the time after 0 your system is having the initial value of this much. That he has represented as V of 0 minus. Okay. That is examiner's mind पे कैसा frame किया question वो बोल रहा हूँ मैं. So अगर challenge करना चाहे तो आप challenge कर सकते. So you may ask that sir it should be 0 plus because you have already used 0 minus here, or at least you should specify after impulse something. You should specify the notation more clearly. That will be better because conceptually it's a doable question, not a difficult. This is the equation of the system, and from that I have integrated from 0 minus to 0 plus because for impulse this will be equal to 1 and q, and for any signal it is 0. dt cancels. C dV, C you take it outside, V of 0 plus minus V of 0 minus. Because if for ideal case it is 0, but impulse it will be different. Chalo. Impulse, if it is a impulse, current flowing through the capacitor must be required. Okay, now the next question. All other questions are very relatively simple. This question is a very doable question. You can solve it by, just give me a moment. Just one moment. You need to find the voltage between these two terminals because two sources are acting simultaneously. We can solve by superposition. Node analysis is also give you the same answer. I'm taking only one source at a time. 1 ampere, 1K and AB 1K, 1K, 1K. Capacitor will be replaced by short circuit. And this will be my V naught. Okay. So because here 1K parallel with 1K is 0.5, 0.5, 1 parallel with 1K is 0.5, 0.5 series with 0.5 will give you, this will be again 1K is the equivalent parallel with 1 milliampere. So what is the voltage you get for the first case is multiply them, you get 1. This is V naught for first case. Second case is apply the 6 volt source, replace this with the open circuit. If you replace it with the open circuit, you will be getting
a balanced bridge kind of circuit, or sorry, the shunt is, I'm replacing my current source with an open circuit. Now I want to find V0 2 with 6 volts here. Because open circuit, no current will flow. These two are in series. So you can take the voltage as 3, 3. Here also, आप 3, 3 ले सकते हैं. क्यों ले लिया मैंने? Okay, polarities are in this way. Plus, minus, plus, minus. Okay, from this direction. Positive, negative, positive, negative. So what is V0 2? Plus 3 minus 3 cancels 0. What is your V0? Algebraic sum of individual responses. That will give you 1 plus 0. 1 is the right answer. Okay. Is it clear? Second case, I replace current source with open circuit. Then these two are in series. 6 will divide equally. Why? Because they are resistors equal. Same bottom also 6 divides equally. 3 and 3. Add plus 3 minus 3. V0 2 is 0. That is about your second question. Next question. Here also, it's a very simple question. You can see here, consider the circuit shown in the figure. Vi is the input voltage in volts. The average power in millivolts dissipated by the load resistance in resonance frequency. Even it is resonance or not, because parallel voltage is same, you need not worry about it much. So the voltage will be same here. Average power will be dissipated by resistive part only. Right? Watts means resistive power only. When you know Vi here, Vi square by R. But because he said it is resonance, at omega equal to omega naught, your Z equal to R. Or you can see this part will act like a open circuit. Generally, it is useful if current source is given, you can use that analysis so that you can find total current. But because it is voltage source, whether it is resonance or not, कोई भी case में parallel पे voltage same ही होना पड़ेगा, power will remain the same. So what is the power consumption here by the resistor? That is the active power. VRMS, that is 12 by root 2 whole square by R, 72 milliwatt. Okay. VRMS whole square by R. Next question. So this is one of the best question in the paper of GATE 2026. Okay. So here in the given circuit, he has given that this is the circuit given, right? So this is the circuit given. RL, C, RC and C. This one is RL and L. Now examiner is asking that this is V, IC, V, theta 1, IL, theta 2. Okay, what is theta 1 plus theta 2? He has given 90 degrees. Okay. The phase quadrature, we can call both the signals are in phase quadrature. So here, what is the required condition for this is generally given by RL into RC must be equal to L by C is the required condition for phase quadrature. Okay, so L by C is how much here? L is equal to 1 microfarad Henry and 1 microfarad. L by C will be equal to 1. Directly I can say 1 is my answer. 1 is my answer, but I will derive it also. So here, let me take this current as I1 in the phasor domain, I2, this is V. So what is your I1? I1 is equal to voltage by impedance, V upon RC plus 1 upon J omega C. So V by root of RC square plus 1 upon omega C whole square angle. Here 1 by J is minus in the denominator, numerator it will be plus tan inverse of 1 by omega C RC. So this is your phi 1 because current leads, right? What about I2? V by RL because parallel voltage is same, J omega L, V upon root of
RL square plus omega L square, RL square plus omega L square. इसका एंगल कितना, माइनस tan inverse of P by L, omega L by R. So here actually you can see this is phi2. So phi2 is in the downward direction, that's why minus, because it is lagging, right? So as per examiner, tan inverse of 1 upon omega C RC plus tan inverse of, here minus is downward direction, okay, magnitude phi1 plus phi2 must be equal to 90 degrees. Can you apply tan theta both the sides? Tan theta, if you apply both the sides, tan A plus tan B, that is 1 by omega C RC plus omega L by RL by 1 minus tan A tan B, 1 minus omega C RC into omega L RL. Okay, what I have done, apply tan both the sides, हमने दोनों तरफ tan अप्लाई किया, देन क्या हो रहा है, दिस इज tan A plus tan B, 1 minus tan A tan B equal to tan 90 degrees is how much, infinity. tan 90 degrees is infinity. ये infinity होने के लिए मुझको required condition क्या, what is the required condition for making it equal to infinity? Denominator must be equal to 0. So here omega, so 1 minus L by C RC into RL must be 0. So what is the required condition? L by C into RC into RL should be equal to 1. Or what about RC into RL? L by C, which is 1. Okay, that is what I have given here directly. For phase quadrature, 90 degrees means phase quadrature. Answer is B. Last question. It is a very standard question. They have given T network. They are asking you A, B, C, D parameters. Here, you know Z parameters. You can do by 2 half T sections also, you'll get the same answer. But what is V1, V2? ZA plus ZC, that is 2K I1 plus 1K into I2, 1K into I1 plus 2K into I2, ZA plus ZC, 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 ZB plus ZC, right? Now, from this is equation 1 and equation 2. From the equation 2, I can say 1K into I1 equal to V2 minus 2K into I2. So take this 1K other side, I1 equal to 10 power minus 3 V2 minus 2 into I2. So this will be my C and this will be my D. D must be 2, C must be 10 power minus 3. D equal to 2 in 4 options, right? 3 options. C equal to 10 power minus 3. C equal to 1, wrong. C equal to 2, wrong. C equal to 10 power, right answer. But I can find here, substitute this in this. What is your V in? V1. 2K into I1. What is I1? 10 power minus 3 V2 minus 2K into 2I2. How much? Minus 4K I2 plus 1K I2. Is it clear what I am done? I have done, this is 2K into I1. 2K into I1 is how much? 2K into 10 power minus 3 V2. 2K into 2 is 4K I2 plus 1K I2. So you can see here, this will give me K and 10 power minus 3 cancel. 2 V2 minus 3K into I2. So this is your A and B. A will be 2, no need, but just I am showing you. A will be 2 and B will be 3 into 10 power minus. So that is about your questions from network analysis, right? So all the 5 questions we are able to solve. Thank you. So hello everyone. In today's session we are going to discuss about the electronics and communication part. Okay. क्वेश्चंस फिर से वही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं. पहला क्वेश्चंस आपका वर्बल का है. द एंटोनिम्स ऑफ द नॉक्ट्रल. ओके, अब नॉक्ट्रल जो होता है, अब इसका वर्ड मीनिंग अगर पता होगा तो आप बड़े आराम से कर सकते थे. ठीक है, नॉक्ट्रल जो होता है ना, इट का मतलब होता है कि
वो पर्सन जो कि रात में जग के काम करे, ठीक है, किंग ऑफ द नाइट, समथिंग लाइक दिस, ये उसके लिए यूज किया जाता है। अब ऑप्शंस क्या है, नॉर्मल, जनरल, एबनॉर्मल। देखो नॉर्मल और एबनॉर्मल तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका मतलब कुछ नहीं होता है। जनरल और एक्सेप्शंस के बीच में देखते हैं, ठीक। एक्सेप्शंस क्या होता है, मतलब कोई अलग से, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कोई एकदम अलग सा चीज हो, तो वो एक्सेप्शनल होता है। जनरल मेरा बिल्कुल जो है सही बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था, इजी लेवल का पार्ट था आपके पास। The statement S1, S2, S3 pertain the score of obtained by the student in the examination, maximum possible marks is 150. The highest score given है, fourth highest given है, again the least of the four student who scored the within 25 is given. तो ये चीज़ें आपको करनी थी। ये भी अगेन बहुत इजी क्वेश्चंस है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा सिर्फ एनालॉगी वाला पार्ट देखना था। अगर आप एनालॉगी वाले पार्ट को समझ जाते हो तो फिर हो जाएगा। हाईएस्ट स्कोर कितना गिवन है हमारे पास, देखो हाईएस्ट स्कोर आपके पास 100 गिवन है, ठीक। दूसरा कह रहा है कि फोर्थ हाईएस्ट, इट मींस कि फोर्थ हाईएस्ट भी गिवन है हमारे पास। अगर हाईएस्ट स्कोर को अगर हम लोग जो है H1 मानते हैं तो फोर्थ हाईएस्ट को हम लोग कितना मान लेंगे, H4 मान लेते हैं। सिंपल, अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। और H1 और 4 स्टूडेंट्स का जो स्कोर है 25 ईच से है, ठीक है। तो अगर मैं H1 और H4 के बीच का डिफरेंस देखूं तो वो भी मेरा 24 ही होगा, ठीक है। H1 और H4 के बीच का जो डिफरेंस है ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 24 का होगा, ठीक। बिल्कुल क्वेश्चन जैसा बोल रहा है बिल्कुल उसी के क्रॉस चलते जाते हैं, ज्यादा इसमें कुछ और नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि S1 एंड S2 टुगेदर इम्प्लाई S3। S1 और S2 क्या हो रहा है, ये यही कह रहा है ना। और S3 क्या कह रहा है कि इतना 4 एटलीस्ट होगा। इन दोनों का जो कितना आ रहा है आपका जो है 24 आ रहा है डिफरेंस, और ये कह रहा है 25 विद इन हो रहा है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो इन चारों स्टूडेंट्स का जो होगा ना मिनिमम विद इन जो होगा वो 25 से नीचे ही होगा। तो देखो पहला तो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। S1 S3 टुगेदर S2, देखो S1 में हाईएस्ट दे दिया है और S3 में मिनिमम दे दिया है, तो ये नहीं बता सकते कि 76 हमारा स्कोर होगा कि नहीं होगा। S2 S3 तो बिल्कुल ही गलत है। S1 इम्प्लाइज S3 हाईएस्ट है और 4 का है। देखो इसमें क्या होगा ना, अगर हाईएस्ट मार्क्स दे दिया है तो हो सकता है 3 बंदों का जो है 90 90 90 आ गया हो, तो उस केस में फिर हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। सो ये सारे के सारे आपके गलत हो गए, सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका ए सही आ रहा है जिसमें S1 S2 जो है S3 को एम्प्लॉय कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इजी क्वेश्चन था ये। देखो the figure below exactly 3 intersecting lines segment with the rectangular portion WXYZ missing which of the following option PQRS is the missing portion of WXYZ। अब देखो इसमें डेटा गिवन है, थोड़ा सा इमेज जो है आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इमेज थोड़ा सा जो है अलग तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आई थिंक विजिबल है, हाँ ठीक है। PQRS है तो मिसिंग पोर्शन बोल रहा है WXYZ का, ठीक। अब PQRS में अब यहाँ पर हमारे पास जो मिसिंग पोर्शन बन के आएंगे उसका कुछ तो बनेगा ना, ठीक है। अब देखो अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ, ये W है, ये Z है, ठीक है। सो 1 बाय 1 देख लेंगे और उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। WZ आई थिंक ये भी नहीं दिख रहा तो लिख देता हूँ मैं, ये X है और ये Y है, ठीक है। तो PQRS अगर बोल रहा है साइड्स में तो मिसिंग पोर्शन के लिए देखा जाएगा। अब इसको ये जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होता है ना उसमें आपको थोड़ा सा जो है इमेजिनेशन ही करना पड़ता है, बाकी ऐसा कोई अलग से रूल नहीं होगा, थोड़ा इमेजिनेशन करिएगा और आपका काम बन जाएगा। अब इसका हम PQRS का देखते हैं। देखो यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस हो रही हैं, ठीक है, जो कि 3 लाइन 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये देखो सिर्फ और इनके बीच का डिस्टेंस देखने पर मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ सिर्फ 2 इंटरसेक्शन है, इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर तीनों कोलाइड हो रही हैं तो भी कैंसिल हो गया। एक सबसे यूनिक डायग्राम में सिर्फ यही बन रहा है जिसमें कि 3 स्पेसिफिक साइड्स भी बन रहा है और 3 स्पेसिफिक इंटरसेक्शन भी बन रहा है। ये एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था, मतलब कि आपके पास सिर्फ ये गिवन था डेटा कि क्या मिसिंग है, किससे हम लोग इसको जो है डेटा को फिक्स कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हमारा ये आंसर था, ठीक है। एस फिगर हमारा बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट था। ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने उसमें भी किया था, जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था तब हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें जो क्वेश्चन है ये चेंज ऑफ बेस का क्वेश्चन जो है ना, ये आपके इलेक्ट्रिकल में भी पूछा था, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। उसी को सिर्फ यहाँ पर लगा दीजिए और आपका काम बन जाएगा। देखो log p 1/n y है,
इसमें अगर हम चेंज ऑफ बेस लगाएंगे ना तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। अगर देखा जाए तो हम पहले वाले को लिख सकते हैं क्या, log ऑफ y डिवाइडेड बाई log जो p है ना, ठीक है, अब p 1/n होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/n log p, ठीक है। सेम गोज विथ यहाँ पर हम अगर लिखते हैं log p डिवाइडेड बाई 1/n log y, ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/16 के, देखो log p कैंसिल, log y कैंसिल, 1/n स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा n स्क्वायर, सो n स्क्वायर, ठीक। अब 1/16 था, ठीक है, तो अब ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो n की वैल्यू देखो आएगी तो n की वैल्यू जो होती है +-4 आएगी, बट यहाँ log है ना इसलिए सिर्फ हम लोग +4 लेंगे, आंसर हमारा b हो जाएगा। ये तो खैर log का क्वेश्चन था, आपको मैंने log के इतने सारे क्वेश्चंस कराए कि आप लोगों को कभी इस वाले क्वेश्चंस में कभी कोई इशू ही नहीं आनी चाहिए, इजी क्वेश्चंस थे ये सब, ये भी इजी लेवल का था। In the following observation made about the score obtained by the 100 students in the examination, for each student there exists another student in the class such that their score are most 10 marks away. If the above statement is false, which of the following statement is necessary? ठीक है, देखो अब इसमें बोल दिया पहला स्टेटमेंट जो है हमारे पास गलत आ रहा है, ठीक है। अब उसके बेसिस पर हम लोग को देखना है कि इसका दूसरा स्टेटमेंट का क्या सॉल्यूशंस हो सकता है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आप सिंगल स्टेटमेंट बेसिस के बेसिस पे मत जाइएगा, जितना डेटा गिवन है सिर्फ उसको देखिएगा। For each student score all of the other student are more than 10 marks away, कहीं लिखा हुआ है more than के केस के बारे में, आप खुद ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, कहीं पर भी लिखा है कि यहाँ पर हाँ मोर देन का केस बनेगा, यहाँ एटलीस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मोर देन का केस कतई नहीं बनेगा। There exists at least of one student in the class for whom the score of all other students more than 10, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने फिर से बोला था हमारी बात एटलीस्ट के बारे में हो रही है। देखो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो स्कोर होता है ना अदर स्टूडेंट्स का, वो हमसे बोल रहा 10 मार्क्स अवे है, लेकिन ये बात भी हो रही है एटलीस्ट के बारे में, तो इसलिए इसको हम लोग नेसेसरली ट्रू में डालेंगे। देखो एक पार्शियल ट्रू भी हो सकता है, बट यहाँ हम लोग इसे नेसेसरली ट्रू में डालेंगे। देयर एग्जिस्ट ओनली द वन स्टूडेंट फॉर होम द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स आर मोर देन, देखो अब यहाँ मोर का केस आ गया, जैसे ही मोर का केस बनेगा अगेन फिर से ये क्या होगा, इनकरेक्ट के फेज में जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट के बेसिस से नहीं कोलराइट कर रहा है, ये एक अपना पर्सनल अजम्पशंस बना रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फॉर द ईच स्टूडेंट स्कोर एग्जैक्टली वन अदर स्टूडेंट मोर देन, ये तो पक्का गलत है, अगर सी गलत है तो डी भी अपने आप में गलत हो गया, ठीक है। तो जो मोर देन और लेस देन का केस बनता है हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल उसी के तरीके पर जाएगा। इसमें कह रहा है ना कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन स्टूडेंट इन द क्लास हुम स्कोर इज ऑल ओके अदर स्टूडेंट मोर देन 10 मार्क्स अवे, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अब देखो इसमें कह रहा है क्या कि की बेसिस पे क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ रिकॉग्नाइज 8 लेटर, द स्टोरी लेटर एनफ टू फिल द बुक्स 5 लेटर, 2 ऑफ द समथिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन में डालूं, क्योंकि पहली बार आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा, हालांकि एक एक टाइप में क्वेश्चंस देखा है, बट आपने इस टाइप के, इसमें वर्ड फिलर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें आपने ऐसा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कभी देखे नहीं होंगे, बट ये क्वेश्चंस जो है बस फिलर टाइप का है। पहला देखते हैं, कह रहा है क्या, सिनोनिम्स ऑफ द रिकॉग्नाइज एज 8 लेटर्स, अगर सिनोनिम्स को हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं 8 लेटर से, इट मींस कि ये एक तरीके का रिकॉग्नाइजेशन है जो सिनोनिम्स के फर्स्ट में है। तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर 8 लेटर के फॉर्म में हो रहा है तो ठीक है, कीवर्ड अरेंज इन द 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर इस टाइप में कोई भी वर्ड हो, मैं अगर कह रहा हूं कि अगर देखने से देखा जाए ना तो मुझे पहला वर्ड जो है बहुत कॉमन जो लगेगा वो आइडेंटिफाई लग रहा है, ठीक है, IDENTIFY, ठीक है। सो आइडेंटिफाई जो एक तो लग रहा है मुझे, बट अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, अभी थोड़ा सा और रुकते हैं। द स्टोरी लॉन्ग टू फिल द बुक 5 लेटर, अब 5 लेटर का कोई है, अब मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्योंकि बात हो रही है आपके स्टोरी लॉन्ग एनफ टू फिल द बुक, तो क्या हम लोग इसके यहाँ पर नॉवेल लिख सकते हैं, ठीक है, ये नॉवेल हो सकता है, राइट। तीसरा, 2 ऑफ समथिंग 6 लेटर, 2 ऑफ समथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 2 ऑफ समथिंग, तो एप्पल भी हो सकता है, लेकिन एप्पल तो यहाँ होगा नहीं, हम यहाँ पर क्या कपल लिख सकते हैं इसको, 2 ऑफ समथिंग देखा है, ठीक है, कपल हो गया।
द फ्रैक्शन ऑफ समथिंग स्प्लिट इक्वली इनटू द टू पार्ट्स 4 लेटर, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक। तो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला क्या लेटर हो जाएगा? अगर 2 पार्ट इक्वली में डिवाइड हो रहा है, लास्ट लेटर हाफ दे रहा है, ठीक है। सो लास्ट लेटर के हिसाब से हम हाफ बोल सकते हैं, HALF, LF, ठीक है, LF, ठीक है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन पॉसिबल फॉर द 4 लेटर वर्ड चिन, कॉइन, इच, नोज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो इजी हो गया ना, क्योंकि वर्ड्स तो हमारे पास यही हो गए, हमारे पास जो वर्ड्स निकले हैं उसके बेसिस पर हमें निकालना था। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है चिन्ह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तो आपके, क्योंकि अब आपके पास वर्ड्स बन गए ना, तो उसके बेसिस पर अब इसको निकालना इजी हो गया, चिन्ह आपका जो है एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी ज्यादा नहीं देखना है, छोटा चीज देखते रहना है। ऑप्शन ए, 3 children PQR grown up X and Y badminton double tournament. X and Y parents are to be the children playing. The children of a X is not the same as the children of a Y. Exactly, one of the children does not have the parent party of the tournament. The following rules are followed. The parent and her child cannot be on the same team. The parent can feature the most one parent. His or child, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पेरेंट चाइल्ड पेयर कैन पे इन द मैचेस। ये इजी क्वेश्चन है। मैच 1 में PX का टीम बन रहा है और QR का टीम है। मैच 2 में PR और XY का है। मैच 3 में जो है RX एंड QY का है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग P डज नॉट हैव एनी पेरेंट्स प्लेइंग। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ऑप्शंस की तरफ आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चंस में ना, जैसे ही आपके पास है तो आप या तो इसको अजम्पशंस बेसिस पे कर लो, थोड़ा सा अज्यूम कर लो कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस में होने के लिए ये चांसेस हो सकते हैं। अगर अजम्पशंस कर लेते हो तो ठीक है, नहीं करना है तो कुछ दूसरा भी ट्राई कर लो। पहला रूल क्या बोला था इन्होंने कि, ठीक है, जो इन्होंने पहला रूल बोला है ना, इन्होंने मैच 1 के लिए रूल यही बोला है ना कि जो पेरेंट और चाइल्ड है, ठीक है, वो सेम टीम में नहीं हो सकते हैं, ठीक। और मैच 2 के बारे में जो इनका एनालिसिस बोल रहा है, हाँ, और जो मैच 2 का जो है इसमें कह रहा है कि जो ग्रोन अप के केस में है, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन जरा देख लेते हैं। P does not have any parents playing, Q does not have any parents playing, R does not have any parents playing, X does not, okay, सिंगल यही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अब इसको डिस्कस करो। देखो, अगर हमारा टीम 2 जो है ना ग्रोन अप X का है, टीम 1 में क्या है हमारे पास P R है। अब चिल्ड्रन जो है वो P और R हैं, ठीक है, और किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं? X और Y के। और X और Y दोनों जो है या तो पेरेंट होंगे या तो 1 चिल्ड्रन होंगे। वैसे ही अगर मैच 3 के लिए देखा जाए हम लोग यहाँ पे, सो मैच 3 में भी इनका, हाँ, मैच 3 में भी अगर देखा जाए तो, क्योंकि अब पहले वाले में हम लोगों ने अज्यूम कर लिया या तो RX वर्सेस QY हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब या तो हमारे पास X जो है वो पे कर रहा है किसके साथ? R के साथ, और R जो है X चिल्ड्रन हो नहीं सकते, तो क्या होगा इस केस में? फिर भाई कुछ चाइल्ड होना पड़ेगा। अब इसके बेसिस पर अगर मैं एनालॉजी निकालूं तो P डज नॉट हैव एनी पेरेंट्स, देखो ये वाला गलत आ रहा है। फिर एनालॉजी के बेसिस पे चल रहा हूँ मैं, अलग से कुछ भी नहीं अज्यूम कर रहा हूँ, जितना डेटा इन्होंने दिया P डज नॉट हैव एनी पेरेंट्स प्लेइंग, ठीक है, ये मेरा डेटा बिल्कुल गलत है। Q वाला भी गलत आ गया, क्योंकि दूसरे वाले केस में हम लोगों ने अज्यूम कर लिया था ना कि जो चाइल्ड कौन है, ठीक है, वो उसके बेसिस पे हमने कर लिया। अब ये कंफर्म है, R वाला कंफर्म है, और ये तो बाय डिफॉल्ट इसकी वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ। ये चार्ट देखिए और सिर्फ इन वाले स्टेटमेंट्स को देख लीजिए। आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस इतने ज़्यादा बॉदर नहीं करने चाहिए, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस थे तो आप बहुत आसानी से क्लियर किए होगे इस सारे को। हालांकि स्टूडेंट्स ने मेंशन किया तो था कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे। वैसे ही देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें भी किया था जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था। अब इस क्वेश्चन का कितना अच्छा है कि अगर कोई मुझे याद भी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी कि PK जो है रिप्रेजेंट करता है पेरीमीटर का ऑफ साइड के, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस पूछ रहा है। एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है क्या टाइम होता है? 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है। पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स ऑफ अ साइड हो गया किसी भी स्क्वायर के बारे में। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए? 10 हो गए। 10 का साइड्स देख लेते हैं। 10 का साइड्स निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 करके निकालेंगे, तो जो सम होगा वो होगा 1 + 2 + 3 करते करते 10 तक होगा। फॉर्मूला आपको पता है n + 1/2 होता है, ठीक है। इसको लगा देंगे तो 10 × 11/2 हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू 55 हो गई। अब यहाँ पर जब 55 आने के बाद हमारे पास कितने जो हैं वो हैं मल्टीप्लाई कितने कर से होंगे? ये हमारे वैल्यू जो दी है 4 टाइम्स ऑफ साइड्स होता है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 4 × 55 = 220
20। आंसर आपका सी। ये क्वेश्चन तो वे टू इजी था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस छोटा सा क्वेश्चन था, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट। A city of Atlantis crafted with the god of the seas portion, ठीक है, मेड, इसमें कर दिए concentric circles, rings। अच्छा, रिंग वाला क्वेश्चन है, ये भी हम लोगों ने किया था जब 2.5 से इंक्रीज करते जा रहा था हमारा रेडियस, 1 by 1 करके ऑल्टरनेट रेडियस थे, सरफेस एरिया ऑफ द, ठीक है, मूवी के बेसिस पे बना दिए पूरा, ठीक है। सो इनर आइलैंड जो है, अब यहाँ पे देखो सब सर्कल हैं, सब सर्कल हैं, तो सबका क्या निकलेगा आपके पास, आपका सबका पाई आर स्क्वायर से एरिया निकलेगा, ठीक। तो निकाल लेते हैं कि लैंड एरिया कितना है, ठीक है, और वाटर एरिया कितना है। सो अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वाटर एरिया, इसको खैर मैंने उसमें भी सॉल्व किया था, हमारे एनालिसिस में भी सॉल्व किया था, ठीक है, लैंड एरिया और वाटर एरिया, ठीक है। अब वाटर एरिया जो है, सबसे पहले देखो ये जो एडजेसेंट सर्कल्स है ना, उनका डिफरेंस होगा, ठीक। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले वाटर एरिया के लिए देखते हैं, तो एडजेसेंट सर्कल में कितना हो जाएगा पहले वाले में, क्योंकि अब ये सब 0.5 के जो डिफरेंस पर हो रहा है ना, ठीक है, 2.5, 3.5, 4.5, 7.5, 9.5, सॉरी 10.5, 13.5 ऐसे जाएगा पूरा। तो सिर्फ एरिया वाइज चलते हैं आप लोग, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि हमारे पास ये जो ए बी का एरिया था वो कितना होगा। तो ए बी मतलब कितना हो गया हमारे पास, सिंगल एरिया विच इज द पाई आर स्क्वायर, राइट। सो इस वाले में कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास 2.5 स्क्वायर, ठीक है। दूसरा, पहला वाला ये हो गया, लेकिन दूसरे के बाद फिर रिंग बीसी भी तो हुआ ना हमारे पास। अब ये जो फिर से दूसरा वाला है वो भी हमारा होगा, फिर यहाँ पर वही लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस अब कितना हो जाएगा 5.5 और 3.5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो अब हमारे पास 5.5 और 3 का डिफरेंस, उसके बाद फिर पाई। सो दूसरा एरिया कितना हो जाएगा पाई ऑफ 5.5 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर। और तीसरा वाले केस में फिर से एक बचा हमारे पास, एक एरिया और बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 5, 7, 10, हाँ, तो 10.5 हो गया और 7.5 का डिफरेंस हो जाएगा। तो पाई जो हो जाएगा आपका 10.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 का स्क्वायर। अब लैंड एरिया पर आते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर जब हम लोग, सॉरी एक चीज मैंने गलत लिख दी है, ये उल्टा लिख दिया मैंने एक्चुअली, रुक जाओ, ठीक है, एक सेकेंड। ये जो है लैंड एरिया हो गया, ये वाटर एरिया हो गया। हमने पहले जो है उल्टा लिख दिया था, पहले मैंने सोचा था उसका निकालेंगे बट निकाला नहीं उसका मैंने। सो लैंड एरिया पहला हो गया। अब वाटर एरिया में क्या हो जाएगा, सेम से हमारे पास जो 3.5 वाला एरिया स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग वाटर एरिया निकालेंगे, तो रिंग ए बी जो है मेरे पास वो हमको वाटर एरिया देगा। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे, तो पहला एरिया हो जाएगा 3.5 और 2.5 का स्क्वायर हो गया, दोनों का डिफरेंस, पहला वाला एरिया, ठीक। सो पाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर हो गया। ये पहला रिंग का निकल गया, ठीक। अब दूसरे रिंग के लिए देखना है हमारे पास, तो 2.5, 5, 7.5 हो गया, तो 7.5 और 5.5 का स्क्वायर डिफरेंस का होगा, ठीक। दूसरे वाले में 5.5 और 7.5 का स्क्वायर, सो पाई जो हो गया 7.5 और 5.5 का स्क्वायर हो गया। और तीसरा फिर 5, 7.5 हो गया, और फिर ये हो जाएगा आपके पास 5.5 और, ठीक, 13, ठीक। तो ये 13.5 और 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। जो तीसरा वाला रिंग आएगा वो पाई हो जाएगा 13.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारे पास आ रहा था पहले, ठीक है। तो मैं इसका आंसर जो है ना, इसका थोड़ा सा आंसर मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। इसका आंसर जो है ना, एक सेकंड, ये आंसर मेरे पास शॉर्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि अब इस वाले पार्ट में इसमें कुछ बचा नहीं था। अब इसमें क्या करना था, जो आपका टोटल वाटर एरिया था, ठीक है, और जो आपका टोटल लैंड एरिया था, इन दोनों को आप जो है रेशियो के फॉर्मेट में निकालना था। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट हम लोगों ने एग्जाम के एनालिसिस में भी पूरा डिटेल में किया था, ठीक है। सो ये वैल्यू आ रही है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, 78.25 आ रही है एक, ठीक है, डिवाइडेड बाई 104, ठीक है, 104 हो रही है, ठीक है। तो 78.25 डिवाइडेड बाई 104, ये वैल्यू जो होगी आपकी, सो जस्ट सेकेंड,
ठीक है, सो जस्ट अ सेकंड। सो 0.75 इसका जो है सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 0.75 इज द सोल्यूशन फॉर दैट। ओके अब ये वाले क्वेश्चंस में फिर से इसमें वही वाटर इमेज मिरर इमेज 2 बार ले लिया इन लोगों ने और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मैं इसमें फिर से बता देता हूँ आपको जो क्वेश्चंस था इसमें, अब इसके पास जो आपका स्ट्रक्चर्स बन रहा है, देखो इन्होंने पहले इसको रिवर्स किया, ठीक है, उसके बाद फिर जो इसको चेंज किया, सिर्फ ऑप्शन एक ही मिल रहा है, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, ठीक है। So I believe like we have covered everything and these questions we have already discussed some questions in the analysis part में, तो उसमें फिर आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। So that's all for today guys, thank you so much for watching, thank you।